So very good evening to everybody, right? Just let's quickly revise whatever we did yesterday, correct? We did the definition of FM, correct? It was basically efficient acquisition of financial resources from where you get the money, efficient allocation of financial resources, where you use this money, correct? And which helps the company to fulfill what? Tell me. Objectives of a company. Were you okay with this? Tell me. Any problem with the definition of FM? Tell me. Three No, sir. decisions of a financial manager. What are the three decisions? Bolo. Financing, investment, and dividend decision. Correct? Financing, investment, and dividend decision. Right? उसके बाद objectives of what? FM. हाँ, इसमें कोई problem? See, when I talk about investment or financing decision, means what? From where I am going to get my money? Debt, equity, short term, long term. Correct? And what will be the quantum? That is how much money I will get from these sources. फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन? टेल मी. यू गैदर्ड दिस मनी, करेक्ट? वेयर यू आर गोइंग टू यूज दिस मनी, करेक्ट? How much to invest in non-current asset? How much to invest in working capital? How much to invest in what? Your dividend. Oh, sorry, in your what? Long-term and short-term assets, correct? Then dividend decision is how much dividend you will pay, right? How much retained earnings to keep, so that can help you devise a dividend policy. These words will get more and more polished as you go ahead in the portion. As of now, are you okay with all the three decisions of a financial manager? Tell me. No problem? Make sense? Yes, sir. Okay. Now, yesterday we were on to one part, right? What is it? Objectives of FM. Correct. Financial management. Primary objective will always be shareholder wealth maximization. Secondary objective will always be profit maximization, EPS growth, market share increase, geographical growth, customer satisfaction, right? Social responsibility. And I added one more right now. What is it? Sales or revenue maximization. Correct? Okay? Have a look. Make sense or does not make sense? Tell me. देख लो एक बार. ओके. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? चलो फिर आगे. टेल मी. Yes, sir. Right? I want to discuss now one aspect. One aspect has been asked in exam, right? Now they ask which of the following objectives, hear me out, which of the following objectives are basically financial objectives. That means you can measure them in terms of what? Financial resources or money. Shareholder wealth maximization, can you measure it? Sir, first $80 per share, now $100 per share. So is it a non-financial objective or a financial objective? Tell me that. Financial. Financial. So when I say non-financial means what? You cannot measure it at all. Example, 1 minute. If this is financial objective, write down FO. Financial objective. Okay. But when I come to customer satisfaction or social responsibility, बराबर है? Customer satisfaction and social responsibility. Is it a financial objective or non-financial objective? Think about it. Can you measure customer satisfaction? Non-financial. तो non-financial objective. बराबर है? Social responsibility, non-financial objective. Sales or revenue maximization, 7th one. Correct? But social responsibility पे तो कंपनी social responsibility accounting करती है. Sorry? पर social responsibility पे कंपनी social responsibility accounting भी तो करती है. हाँ तो बट अकाउंटिंग भले करे, करेक्ट, बट इज इट 100% श्योर कि आपने एक चीज बिगाड़ी तो 1 लाख रुपए का खर्चा होगा या 1 लाख रुपए का फायदा होगा? रादर टेल मी, कैन यू मेजर दैट ऑब्जेक्टिव? टेल मी. नो. राइट? इन डॉलर्स और इन व्हाट मनी टर्म्स कैन यू व्हाट मेजर? नहीं. सेल्स और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, राइट? कैन यू मेजर? Your sale has gone up by 1 million, 2 million, 10 million, 20 million. Is the measurement possible? Tell me. Okay. देख लो. So what should I say? Is it a financial objective or non-financial? बोलो. Financial. Financial. Okay. Coming to profit maximization. बोलो. Financial, non-financial? Financial. 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 EPS growth? Financial. Financial.
Now the question is market share increase. Bolo. What is it? Financial, non-financial? Non-financial. Non-financial. Why non-financial? Because it's not directly connected to finance, like Okay. share in the market will. Okay. So is it financial or non-financial? Non-financial, you say? Yes. One more logic to it could be, have a look. Do you remember when Jio was launched? Do you remember 299 or 249 something Yes, plan was sir. there, no? कि उसमें free internet. Do you remember? They completely changed the market. याद है? So they got a lot of customers. They increased their market share, but did their profit increase? Did their sale increase? See, they gave 3 months worth of free things into 50 or something like that. तुमको क्या लगता है? What do you think about it? Would they have made a lot of profits out of it? No. Instead, losses. Right? So will it, if your market share increases, will it 100% surely be a financial objective? No. So non-financial objective. You could actually what? Fight with me on this, but at the end it is non-financial objective. But when it comes to geographical growth, right? So isme there are what? There is going to be some kind of what? Tell me. Problem between you and me in this. It is financial as well as non-financial. But agar sirf geographical growth is taken as number of states, will it 100% guarantee financial measurability? Tell me. Generally we keep it as non-financial objective. Okay, क्या देख लो? Right? Have a look. Make sense or does not make sense? Okay. This is what the objective का thing is. चले फिर आगे. Okay. Any problem with this? Objective. So I hope. Okay. Can I go ahead then? Any problem, anyone with this? Shallow. Now after objectives, right? Stakeholder theory. What do you know about stakeholder theory? Tell me. What are stakeholders? Are stakeholders and shareholders one and the same thing, or are they different? They are different. They're different. So have a look. This is company. How do we do stakeholders? How do we understand? Or what are stakeholders? पहले वो लिखो. Give heading stakeholders. Stakeholders are parties or basically people who get affected by any decision taken by the company. Write down. Stakeholders are parties who get affected by decisions taken by an organization. Tell me one thing. ठीक है चलो by an organization. ठीक है affected by decision taken by an organization. Full stop. Now how do I write stakeholders? There are types of stakeholder का table. ठीक है so write down heading types of stakeholder. There are 3 types of stakeholders generally which are covered in your books. ठीक है but don't make a table out of it. We'll draw a diagram for it. Right now see this is a company. Okay in the company generally now see what I'm trying to say. Now what company does? Company has taken a decision. Example
Okay. That was up to last year, company was making 5,000 unit का production company was doing. Now company is doing 10,000 units का, नहीं 5,000 नहीं, पहले 10,000 था, now moving to 5,000. Now see, if from 10,000 company moves to 5,000 unit का production, tell me, right? And earlier there were directors and employees in the company. There were 300 employees in the company. But now see, company sees this as an opportunity, not an opportunity, but sees this as one way of saying, right? Just a second. So company, right? 10,000 unit ka now 5,000 unit pe production coming down. 300 employees are there. Don't you think company would be able, or do you think company would be able to manage so many employees with reduced production? Think about it. All salaries and of all the 200, 300 employees, will the company be able to manage? Socho zara. Or no? Will it be able to manage? No, sir. No. So the first decision taken by the company would be simple. Boss, fire 200 employees. So whenever a decision is taken, the most grave impact of that decision, right, falls on the people who are within the organization. Who are what? Within the organization, right? These are called as director employees. These are called as internal stakeholders. What are these called? I will draw it first, then you draw it. Okay? Internal stakeholders. Who are internal stakeholders? Director and employees in the company. Okay with it? First line of defense, the most affected by any decision. Now what happens? Have a look. 10,000 units ka production, now going to 5,000, right? So because of that, right, what happens is the company is not able to what? Fulfill the customer demand, or better, what will happen from 10,000 production going to 5,000? Will the profit also fall? Tell me. If the profit falls, will the Yes. shares ka price also fall if there is a negative news in the market? Yes. Yes. So who will be affected? Shareholders. Shareholders. Investors. Sir, then what used to happen now, sir? We used to pay interest to our debt holder, or banco we used to pay interest for our loan. Because now we are in losses, correct? Or the profit has reduced, we are not able to pay interest to the bank. Who will be affected by this? Tell me. Debt holder or loan note holders? Or bank loan. Correct? Or bank, possibly. Correct? Then see, now what you used to do? First you used to do 10,000 unit production. Abhi 5,000 unit production. Correct? So now first you used to order 10,000 units of some material, some raw material, right? Which you use one unit in this. But now you will order only how much? 5,000. Has your supplier lost potential business because you downsized? Tell me. Yes or no? So who is the next stakeholder? Bolo. Who is the next stakeholder? Supplier. Supply. Now your customer was very loyal to you, and what? Tell me. He always thought that boss, he will use your what? Tell me. Goods only. But the rate at which your goods are made, now the customers are not very happy because they are not getting your what? Tell me. Goods. So who is one more? Customer. Correct. But one person who's not very sad but very happy that you are downsizing is whom? Tell me. Competitor. Your competitor, boss. He's so happy that you are downsizing. These are called as connected stakeholders. What are these called? All this circle is connected stakeholders. And last but not the least. Now see, 300 employees were there. You fired 100 employees. You fired how many? 100 employees. Right? These 100 employees make a union and go to the government authorities. Can they do that? Tell me.
If you fire 100 employees without even giving intimation, you tell them today, from tomorrow don't come to work, will they be very happy? Tell me. No. So they will go to the government. Will government, or does your decision of downsizing has an impact on the government? Tell me. Yes, taxes may downfall. वो तो है, but majorly if your employees go there, do all chakka jam and everything, correct? So government agencies will come up, correct? Yes. Then government will analyze everything that, Are Baba, these people are what? Fired without any intimation, correct? This should not happen. Hence, we should make a law that you cannot fire people. You cannot fire people without what? Paying them properly. Now, see, you want to fire people, give them 2-3 months ka salary and then fire. So they can find another job, right? So the government goes ahead and makes labor law for it, correct? That boss, right, tells the regulators or lawmakers, correct, that boss kuch bhi karo, but these kind of mass firing should not happen. So the next person who's are regulators, correct? Regulators or lawmakers, whatever you want to say. बराबर है क्या? देख लो. Okay. Any problem with these two? Okay. Can I go ahead? Yes, sir. Now what happens? Government, lawmaker, no one is hearing to the employees. So what do employees do? Simply, they go to some what? There are a lot of political what parties or groups which support these kind of workers who get fired, right? They go and create pressure on the company that boss, we don't know. If you do not take these employees back, we will do XYZ to the company, whatever. Right? You know what I'm saying, okay? So those are called as pressure groups. Pressure groups. They are external shareholders. Pressure groups. बराबर है क्या? देख लो. Okay. And last, right? Now see, you have fired 100 people. Pressure group cannot do anything. Government cannot do anything. Lawmaker, regulation cannot do anything, right? You are fired. Everybody was working there would have some or the other family. सबका कुछ ना कुछ family होगा. Yes or no? Tell me. Obviously, that family would be affected, right? Not only one family, but 100 families. Or can I say, because of that, will there be poverty? Will there be problems of unemployment, right? And tell me, as a large, will the society be also impacted because of your decision of downsizing from 10,000 to 5,000 units? This happened quite in, this happened, I think, in Mumbai a lot when all the cloth mills were closed. मालूम है? All the cloth mills were closed because malls were to be made, buildings were to be made. Idea hai? Have you heard stories of those? Maybe, or if you ask your father, right? Yes, sir. I Your have parents, heard. correct? So Mumbai was before actually a hub for making cotton because export was easy from there, right? Export, import, whatever you have to do was very easy from there, right? So the mills were, I think, 100 years old. All those mills were closed and all the mill workers were fired. Families of their mill workers were kept what? In poverty. Because of that, they went into poverty. They could not get any other job anywhere easily, right? Because of them, all of them were fired. Society at a large. These are external stakeholders. These are what? External stakeholders. I don't know how you learned the stakeholder ka theory, but this is how you should remember what? The stakeholders. बराबर है क्या? इधर दे दो को. रुक. This is external stakeholder. Okay क्या? this circle you could say. Right, all on one side. हाँ, but sir, connected stakeholder तो किधर है नहीं, right? If they say that divide the stakeholders, correct? In either internal and external, लिखो. If only internal and external classification.
So what do you think? Where will connected stakeholder go? External में internal? External. External में, right? Connected stakeholders will go to external stakeholders if only two classifications are there. Okay, can we go ahead? Bolo. Now let's talk a bit about shareholder and stakeholder. See, I am writing one sentence. Tell me whether it is true or false. Excuse me, sir. हाँ सर ये जो आपने लास्ट लाइन लिखी ना ये वाली इफ हाँ ओनली इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन कनेक्टेड स्टेक सर ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल मैडम देखो कंपनी के हु आर द इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टर एम्प्लॉयज यस राइट और जो कनेक्टेड है आर दे इनसाइड द कंपनी नो तो दे आर एक्सटर्नल ओके वैसे हम कनेक्टेड बोलते हैं बिकॉज सी द मोस्ट वेन एवर अ डिसीजन इज टेकन द मोस्ट इंपैक्ट विल बी ऑन द इंटरनल स्टेक होल्डर्स करेक्ट द हाइएस्ट इंपैक्ट उससे थोड़ा लो इंपैक्ट ऑन कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स वेरी लेस इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट लॉ मेकर प्रेशर ग्रुप सोसाइटी एट लार्ज करेक्ट that's why that internal connected and external right direct impact on internal stakeholders direct indirect के बीच में impact on shareholder debt holder supplier customer competitor and very indirect what tell me impact on government lawmaker pressure group society at large ऐसे ओके थैंक यू okay then true or false have a look all shareholders are stakeholders in a company. And दूसरा all stakeholders are shareholders in a company. Which one is true? Which one is false? फर्स्ट First one is First true, is second is false. First see. one is First true, sir. is true. So all shareholders are stakeholders, but all stakeholders are shareholders. नो Is supplier a shareholder in your company? Customer a shareholder? They are only stakeholders. So shareholders are stakeholders, but so this is what true. This is what false. Everybody okay with it? Tell me. In stakeholder, shareholder is one of the stakeholders. Correct or not? देख लो एक बार. Any problem with this? Can I go ahead? Tell me. थोड़ा सा now let's go a bit into solving, right? Because अभी theory you will get bored, right? तो आ जाओ चले. Come to the part. Write down profit format. Revision. Give the heading profit format for revision. If you remember, the profit format is such: sales minus variable cost. What is it? Variable cost. Anyone who has doubt in what is variable cost, now is the time to ask. I teach PM also, so I am the correct guy to help you. Gives you contribution. Anyone who does not know this at all, sales minus variable cost gives you contribution. Anyone who does not know this, ऐसा कोई है? एक सेकंड ना.
ओके हाँ वंश बोलो, यू डोंट नो व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब देखो दिस बॉटल, डू यू सी ये बॉटल, लेट्स से इसका सेलिंग प्राइस $100 है, ओके विथ इट, $100, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ मेकिंग दिस बॉटल, करेक्ट? इफ यू मेक दिस बॉटल, हाउ मच एक्सपेंस यू विल इनकर इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। दो तरीके की कॉस्ट होती है, राइट इट डाउन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। समझ लो फिक्स कॉस्ट 30 है, माइनस डेप्रिसिएशन लिखो 10, यानी हाउ मच इज द प्रॉफिट या अर्निंग्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं जनरली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही नाम पीबीआईटी भी होता है, राइट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही नाम पीबीआईटी। पीबीआईटी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीबीआईटी? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये सब, टेल मी हाउ मच इज दिस, ये 40 गया 30। नाउ लेट्स कम टू इट, ओके सुन लो, राइट? नाउ सी आई टेल यू, नाउ टू मेक दिस बॉटल, ओके ये स्टील का बॉटल है, राइट? सो यू रिक्वायर स्टील, करेक्ट? इफ यू डोंट हैव स्टील, कैन यू मेक दिस बॉटल? नॉट एट ऑल। इधर कुछ प्लास्टिक कवर, वट एवर दिस इज, आई थिंक दिस इज फाइबर और समथिंग, राइट? This cover that is there, this will be required. So for this bottle, how much plastic will be required? Steel will be required, fiber will be required. This what? Tell me, cap of the bottle is made out of plastic, fiber, whatever it is, correct? Hardened plastic or something. All these things or raw material required for the what? Tell me, bottle to be made. Now see, only bringing in raw material, will you be able to make the bottle? Think about it. Someone would have to what? Tell me. You will basically have to mold the bottle, correct or not? Some labor will be required. So some direct material will be required or raw material will be required. Some labor will be required. Some machine work also will be required, because see this steel that comes up, no? Generally steel, whenever you buy as raw material for this bottle, correct? It actually comes in steel slabs. इसे sheet रहता है steel का, correct? You have to put it into a machine. So for basically molding the bottle, the steel has to be cut, correct, in shape of the bottle. All these things have to happen in a machine. Then there is a labor or a person who does what? Curvature of the bottle. Here he will do what? Plastic parts, small components he will join, right? Without the labor, without the machine, and without the material. So I require raw material, I require labor, right? And I require machine. Machine में you put up fuel. So machine में let's say you put 10 liter fuel, you can make 100 bottles. Example दे रहा हूँ, correct? So sir, in 1 liter 10 bottles can be made, correct? So you can surely say what? Sir, this much XYZ amount or 100 ml of fuel is required to make one bottle. 100 ml whatever cost is, everything will be added in the variable cost, correct? But now see, to make this bottle, can you make it in the open या कोई factory लेना पड़ेगा? Tell me. Factory has to be taken, right? क्या आप लोग कुछ बोल रहे हो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ है क्या? Right? Shabnam, okay with it? Tell me. Are you understanding what I'm trying to say? Yes, sir. हाँ, ठीक, okay. So okay with it? So that is variable cost. That means if I make that component, correct, what will be the cost? But tell me, can you make this component ऐसा किधर भी in the house, somewhere on the road? Sir, we took a small place or a factory where we are making this. Factory free में मिलेगा क्या? Tell me. No. Factory you have to pay rent. So rent you pay. Now see, if you now see 1 month you have a lot of demand for the bottle. Next month you don't have demand for the bottle. Tell me. Still, will you pay factory rent or you not pay factory rent? Tell me. Will Will pay you the pay? So you make the bottle, don't make the bottle. Will factory rent be a fixed cost that will be charged every month? Can you tell the owner, sir, वो इस महीना ना there was no order, तो हमने कुछ खास बनाया नहीं है, तो आप रेंट नहीं लेंगे क्या? Would he really listen to you? Tell me. Would he even care about? Tell me. No. The thing? Not at all.
अरे वो जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं, तुमको बोलेगा गिव मी रेंट और एल्स वेकेट द प्रॉपर्टी, तो वो पर खर्चा तो लगेगा। नाउ इलेक्ट्रिसिटी, now I don't know whether you know how many of you have paid an electricity bill, but electricity bill has two components. Do you know what are the two components of the electricity bill? Fixed component and variable component. Sir, kaisa? Every month you have to pay 300 400 rupees fixed, at least in Indian scenario. मेरे घर का बिल आता है अभी 500 550 के आसपास फिक्स्ड है। I have a bigger, मेरा एक जो the meter that I have is a 3-phase meter, right? So that anytime there is a problem, the electricity or whatever components or electrical equipments that I have, TV, fridge, they won't go bad because of voltage problem or something, right? So 550 rupees I have to pay every month, right? Fixed 500 or 550, I don't remember, something like that, for that meter, right? Every month I have to pay. Even if I don't use a single unit of electricity, I still have to pay 550 rupees. That is what the logic is, correct? But now see, logically uske upar whatever usage happens, right, uske upar I have to pay the bill. That is the variable component. So variable component can be taken in the variable cost, correct? But that fixed component is a fixed cost. बराबर है क्या? Have a look. Now salary, someone's salary, right? He comes to the what? Tell me, job. He sits there. If you don't give him work, then also do you have to pay him monthly salary? Think about it. Variable पे छोड़ दो, but जो fixed you have to pay to someone, that तो 100% will be paid. What do you say? Am I on the right track? Fixed cost. Fixed cost में कोई problem, variable cost में कोई problem. अभी are you forming the what? Basic definitions समझ में आ रहे variable cost, fixed cost? Or are you still not clear? बोलो. Yes, sir. ठीक है, तो I'll tell you telephone. Yes, sir. Telephone में also अभी तो I think now तो I cannot even say telephone. You don't know what landline phones are. Have you used landline phones? Your generation landline phones मतलब ऐसे तुमको ऐसे you must be feeling that it is some antique what? Tell me. Electrical equipment, right? So when I was what young, वो टाइम पे we had these cordless phones. मालूम है तुमको? Have you heard about it? Yes. राइट मैडम, आप एकदम ही मेरे वाले क्या है, आप 90s किड है ना, बराबर है Yes. ना? हाँ, इसलिए राइट, दीज पीपल आर क्वाइट, क्योंकि उनको कॉर्डलेस मतलब क्या वही मालूम नहीं होगा, कॉर्ड मतलब क्या वही मालूम नहीं होगा। मालूम है क्या रे तुमको एवरीवन, या मोबाइल ही मालूम है डायरेक्ट? शबनम व्हाट नहीं इज इट? सर, नहीं पता। नहीं पता ना? हाँ, ऐसा एक आता था इक्विपमेंट मैडम, ऐसा वायर लेके आते थे बाहर से, ठीक है, और मोबाइल ऐसा बड़ा ऐसे ये होता था और उसको हम जोड़ के यूज करते थे, राइट? हमारे बचपन में। अभी आई फील सो मच नॉस्टैल्जिक अबाउट थिंग्स, आई टेल माय स्टूडेंट्स कि ऐसा कुछ होता था, दे लुक सो ऐसे ब्लैंकली एट मी दैट आई फील वेरी ओल्ड नाउ, राइट? अभी अगर आप बोलोगे कॉर्डलेस, कॉर्डलेस मतलब ऐसा था कि पहले कैसा था, अगर फोन आता है तो आपको फोन के पास ऐसे कॉर्ड थी, राइट? तो फोन के पास खड़े रह के बात करना पड़ता था, राइट? कॉर्डलेस से आप पूरे घर में घूम के बात कर सकते, वैसा फोन था, राइट? पहले आपको मालूम है, ये तो मेरे जमाने का हो गया, मेरे डैड के जमाने में, ठीक है, व्हेन ही वाज यंग, आप आज अगर मोबाइल का सॉरी मोबाइल ही बोलो, लैंडलाइन का अगर आज बुकिंग करोगे ना, करेक्ट है, तो 6 महीने बाद और साल भर बाद लैंडलाइन घर आता था। आइडिया है आपको? इट यूज टू टेक 4 months to 6 months फॉर यू टू गेट अ व्हाट लैंडलाइन कनेक्शन। क्या वंश, तुम्हारा तो क्या है, सुबह सिम कार्ड लिया शाम को एक्टिवेट ना? बोलो क्या लगता है आयुषी? Yes, sir. है ना? और ऐसे सब होता था सच में हमारे टाइम पे। मैं जब छोटा था तब हमने जब इसका टेलीफोन का लाइन लिया था, तो आई थिंक इट टुक अराउंड 3-4 months फॉर इट टू गेट प्रोसेस्ड एंड टेलीफोन टू गेट व्हाट इंस्टॉल्ड एट आवर होम, राइट? फिर उसमें भी था, अरे बहुत आपने, मैंने तो बहुत डेंजरस डेंजरस चीजें देखी है, ठीक है, बचपन में, राइट? आप लोग अच्छा यूज यूर फ्रॉम दैट व्हाट जनरेशन की कन्वीनियंस बहुत बढ़ गया है। नहीं लेकिन अच्छा है, कन्वीनियंस इज गुड, राइट? उसको हम कोस नहीं रहे, चेंज इज एविडेंट, उसके बगैर जिंदगी आगे चलेगी नहीं, राइट? तो आर यू ओके विथ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट? अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, टेल मी ना। वो मशीन का बात किया फॉर मेकिंग दिस बॉटल, ऑब्वियसली विल यू, जनरली मशीन कोई भाड़े पे नहीं लेता है, राइट?
Generally, if you're doing what your proper production or business is based on that machine, you will obviously buy it, and it will obviously have some life more than 12 months. आप ऐसा 2-3 महीने का मशीन बाय करोगे क्या? Generally, you will do heavy investment into non-current asset. तो उस पर कुछ ना कुछ depreciation आएगा. Tell me, yes or no? Yes, Variable sir. cost, fixed cost, depreciation. Okay है क्या? Now by actually doing your business, देखो हाँ, थोड़ा सा बॉक्स में से बाहर निकलो बिजनेस के. ठीक है सर, ये ना 30-30 ये बॉटल बनाए ना, $100 का सेल हुआ सर, $30 में बॉटल बनी. एंड सर, टू मेक दिस बॉटल द एनवायरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड, मशीन, फैक्ट्री, सैलरी, वो जो भी वॉट एवर ह्यूमन, जो भी तुमको बोलना है, एचआर बेचर, जो भी ह्यूमन रिसोर्स, जो भी सब कुछ लगा. करेक्ट. विथ ऑपरेटिंग द बिजनेस, राइट. सुन लो, फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस or from operating, I get 30 rupees into my pocket, or $30 in this case. That is my operating profit, or famously called as PBIT, or also known as EBIT. EBIT का full form क्या? Earnings before interest and tax. Now see, you earn 30 rupees or $30, correct? The first person that will sit outside your house for money, right? Now see, again coming back to, sir, we have debt, we have equity, correct or not? The first person who will ask for a share in your profit is the interest on bank loan. Yeah, interest on loan likho, correct. He will say, boss, first you pay me. So 5, let's say example, okay, you paid interest on loan, so 25 remaining. अब देखो यहां तक 30 तक is something that you are earning from your business, correct. 5 is you are giving the person, देखो 5 is not actual business का खर्चा. See, whatever actual core business you are doing, उससे $30 का profit. Now you have taken money from someone to do business. वो machine you had bought, you had taken some loan, so you are paying interest to that debt holder or loan note or loan, ऐसा बोलो. Okay, first interest. Now you get this 25. This 25 is called as PBT or EBT. What is the full form of this? Profit before tax या earnings before tax. ठीक है. 25 is what? Earning before tax. Anyone has any problem here? बोलो. Okay. What do you say, Shabnam? क्या बोलता है? Right. Then once the loan note holder or once the what bank loan का interest is gone, the next person waiting in line is whom? Tell me. Government. Authorities. निर्मला सीतारामन जी. Correct. लाओ. क्या लाओ? 30%. Correct or not? Give me tax of how much? 30%. 7.5 दे दो. 30% of what? The PBT, profit before tax. यानी ये 25 into 30%. How much is this? 7.5. Right? You give Nirmala ji how much? 17.5. Right? Okay again. So remaining is how much? Sorry, 7.5. Remaining is how much with you? 17.5. This is called as profit after tax. PAT. Profit after tax. PAT. Everybody okay with PAT? यानी whenever I say PAT means, एक मिनट, means sir, my operating of the business, उसका profit, out of that I have deducted interest that I gave to the loan note holder. I also decrease what? Tax that I gave to Nirmala ji. Correct or not? Everybody okay with that? अभी तो वो GST का भी came up, no? देखा ना आपने? GST reshuffling happened. Tell me. देखा है नहीं देखा? GST 2.0. GST 2.0 कुछ नहीं, old churn in new packet. Correct or not? कुछ नहीं रहता वो सब, right? All the things are just what? Tell me. Taxation is a way
ऑफ व्हाट, टेल मी, कंट्रोलिंग यू, बराबर है ना, ऐसा है। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कोई प्रॉब्लम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, एक बार देख लो प्लीज, फिर आगे बढ़ो। फिर ना, वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दिस, but there is something called as preference shareholders. How many of you know what is preference shareholders? What are preference shareholders? Any idea what are preference shareholders? एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है एंड एक इक्विटी शेयर होल्डर होता है. एनी आइडिया व्हाट बोथ ऑफ देम आर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? Preference shareholders are given preference in repayment and dividend declaration. In dividend declaration, correct. Okay. Repayment. Repayment, correct. That means, can I say, देखो sir, right? Preference shareholders are people who had given us money, right? But they want a fixed dividend to be paid every year. Sort of similar to loan, but they are not owners, they are not loan note holders. Or they are not what? They have not given you loan and neither they are owners of the company. They are somewhere between what? A loan and equity. They have characteristics of both, right? And sir, equity shareholders are actual owners of the company. Preference shareholders are not owners, correct? But they are paid fixed dividend. They are paid what? Fixed dividend. So whenever you are paying dividend, now see 17.5. Now see, dekho. Sir, I got money in the form of equity, preference and debt. Equity, preference and debt. Sir, सबसे पहले whom did you pay? Here. Whom did you pay? First preference was given to whom? Tell me. Loan note holder. Correct? Then second you pay what? Dividend to preference shareholder. Dividend to preference shareholder, let's say $5. Example, correct? You are left with $12.5. This is called as earnings. Now see, you have paid, you had three finance or three different sources of finance. Sir, bank loan tha, preference shares the, and equity shares the. You paid bank loan, you paid to the preference shareholder. Now whatever this earning is remaining or attributable to whom? Tell me. देखो, you had what? Equity, preference and loan. You paid to loan note holder interest, you paid preference shareholder को dividend, correct? Now whatever is earning, this is remaining, it is attributable to whom? Tell me. It is attributable to equity shareholder. Attributable to whom? Equity shareholder. देख लो ओके है क्या? Make sense or does not make sense? EA ESH बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? Now let's say you are sitting with the shareholders. Shareholder को you showed this profit and loss. That was now 12.5 remaining. Then shareholder will say what? Tell me. If you are shareholder, what you will say? Tell me. Pay us dividend, no? बराबर है ना? Equity shareholder को dividend. How much dividend to be paid? That is one question that we have to ask. Correct or not? How much dividend to pay? बोलो बोलो बोलो. How much dividend to pay? Is the question that will be asked. Is the question to be asked? बराबर है क्या? EA/ESH. Right? So will the equity shareholder say pay full dividend, pay full 12.5 to us? Tell me. No. You are equity shareholder. तुम equity shareholder हो, No, sir. 12 रुपया कमाया. Will you ask for the full money? Once क्या लगता है? No, sir. No? क्यों नहीं? अरे कमाया ना पैसा, ले जाओ ना घर. फिर हाथ में क्या रहेगा? रिटेन हाँ? Separate नहीं, company retain will earnings take नहीं करके रखना है. आधे growth देगी. और लोन ले लेंगे. The और retained earnings. हाँ, आयुषी बोलो. यस, Retained earnings. रिटेन अर्निंग्स. बट अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आपने हल्ला किया, यू गो टू द कंपनी एंड व्हाट, आस्क देम that boss, what is going on, we need this 12.5, right? Can equity shareholders decide how much dividend will be paid? No. Or directors decide how much dividend is to be paid? Corporate law.
कौन डिसाइड करता है? टेल मी। डायरेक्टर्स डिसाइड। डायरेक्टर डिसाइड करता है बॉस। डायरेक्टर डायरेक्टली डिक्लेयर डिविडेंड। और किसको पूछते हैं? किसको पूछते हैं? देखो, हु शुड दे आस्क हाउ मच डिविडेंड इज टू बी पेड? फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजर। बॉस। करेक्ट और नॉट? राइट? ओके है क्या? देख लो, सही है क्या? ओके है? देख लो, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। ओके है? चलो, यस सर। देन इफ यू आर ओके विद दिस, चलो एंड में फिर क्या है? ई ए ई एस एच, राइट? उसमें से क्या माइनस होगा? टेल मी। योर डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड विल बी डिडक्टेड। कितना इक्विटी डिविडेंड? समझ लो $5। देन हाउ मच इज द मनी रिमेनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स? बोलो, हाउ मच इज द रिटेन्ड अर्निंग्स? $7.5। बराबर है क्या? ओके है? कोई प्रॉब्लम? टेल मी। चलो आगे फिर। कैन आई गो अहेड? सर कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन के सर? सॉरी? कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता हाँ, है सर? कंट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन सिंपल एकदम। देखो, 100 में से ना, देखो, ये प्रोडक्ट मैंने बेचा ₹100 में, बराबर है? ₹100 इज द सेलिंग प्राइस। टू मेक दिस, करेक्ट, ₹30 का क्या लग रहा है? एक्सपेंस लग रहा है, बराबर है? टू मेक दिस बॉटल। सही जा रहा हूं? टेल मी। यस सर। तो हाउ मच इज इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉफिट? वो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। या कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू फिक्स्ड कॉस्ट टू बी कवर्ड इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर ₹70 बच रहा है, राइट, तो ₹70 में बाकी के खर्चे निकाल लो। दैट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रोडक्ट टुवर्ड्स अदर फिक्स्ड कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू बी टेकन केयर ऑफ। थोड़ा वैसे सोचो। कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड इस वजह से है। मेरे को मालूम नहीं वेदर समवन हैज टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ दिस, बट दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। that product which is sold for 100 and made for 30 is contributing $70 so that you can take care of other expenses। बराबर है क्या? देख लो, does it make sense? Have a look, right? बराबर है सर? देखो, ओके, कोई टेंशन? बोलो, कैन आई गो अहेड? चलो आगे। Everybody okay? चलो, now there is a formula that we need to do. You have done this formula, correct? इसके नीचे लिखो नंबर ऑफ शेयर्स। ये लिख लो ऐसा $1,000,000 आगे लिख लो, ठीक है? $1,000,000, $7.5 million इज योर रिटेन अर्निंग्स। दिस इज $1,000,000। सब जगह $1,000,000 लिख दो प्लीज, सो दैट यू नो दैट दीज आर $1,000,000, ठीक है? डॉलर, मिलियन, $1,000,000, वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक? चल, so now if number of shares of company, correct, is 1 million shares, therefore if I say find the earning attributable to each share, earning attributable, calculate earning attributable to each share. How much is the earnings attributable to each share? एक मिनट, पर शेयर होल्डर को कितना अर्निंग मिलना चाहिए था? टेल मी। $12.5 million is earned because of equity shareholders money, right? And there are 1 million shareholders. So tell me how much is the earning attributable to each shareholder? या each share ज्यादा बेटर वर्ड है। each share कितना है? $12.5 पर शेयर।
That is only nothing but EPS, earnings per share. Earnings per share, what is the formula? Now tell me, what is 12.5? Bolo. Profits attributable to equity shareholders divided हाँ. by earnings. Earning attributable to equity shareholders. Earning attributable to equity shareholder. The whole divided by number of shares. Yes. बराबर है. तो अर्निंग्स कितना है? अभी वो तो कर लिया ना कैलकुलेट. ठीक है. नाउ टेल मी, बट इफ देयर इज अ सिचुएशन, सुनो, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. इफ देयर इज नो डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सुन लो, इफ दिस इज जीरो, करेक्ट, then will the profit after tax be equal to EAESH? PAT and EAESH, will it be one and the same thing? Yes or no? तो लिखो note, if there is no preference dividend, then PAT will be equal to EAESH. आ सकती है ऐसी सिचुएशन, has come up in exam where they directly give PAT, ठीक है, and no preference share in the balance sheet. So you have to consider, or you have to assume what? PAT is equal to EAESH. ठीक है क्या? Also DPS का फॉर्मूला करना है, डिविडेंड पर शेयर, और आई विल से कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर. कैलकुलेट डिविडेंड पर शेयर. एक मिनट, हाउ मच डिविडेंड आर यू पेइंग? कैन यू टेल मी हाउ मच डिविडेंड? $5 million divided by number of shares. and how many shares are there? 1 million shares. तो बोलो, how much dividend are you paying per share? How much dividend are you paying per share? Tell me. $5 per share. Okay, okay. Have a look. Therefore, what is the DPS or dividend per share formula? Tell me. Dividend per share. ऊपर क्या है? 5 million is what? Tell me. What is $5 million? Dividend per share. Dividend paid. Sorry, Dividend no. paid or total dividend paid. बराबर है क्या? Total dividend paid divided by number of shares. Okay. Have a look. कोई प्रॉब्लम? चलो मैं आगे. सिंपल. ईपीएस क्या है? टेल मी. EAESH बाय व्हाट? टेल मी. सो लॉजिकली थिंक अबाउट इट. सर, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया ना, वॉट एवर मनी दे पुट इन, बिकॉज ऑफ देम देर इज अ $12.5 million अर्निंग दैट हैज हैपेंड. व्हाट हैज हैपेंड? $12.5 million earnings, and there are 1 million shareholder. So per shareholder को कितना अर्निंग एट्रीब्यूटेबल है? $12.5. बराबर है क्या? देख लो. And when I said dividend, so sir, total $5 million dividend paid divided by the number of shares gives you what? Dividend paid per share. बराबर है क्या? ठीक है क्या? देख लो. चलो आगे. चलो, कैन वी गो अहेड? सर एक बार Yes, sir. रिक्वेस्ट फोन करो. क्या लिखना है बेटा आपको कुछ? प्लीज. ईपीएस डीपीएस का फॉर्मूला ओके. ज्यादा क्या है, लोड वाले फॉर्मूला नहीं है. ठीक है. ओके सर. ठीक है. डीपीएस डन. रिटर्न फॉर्मूला. नाउ लेट्स गो बिट मोर अहेड. टोटल शेयर होल्डर रिटर्न.
टोटल शेयर होल्डर रिटर्न, TSR बोलते हैं इसको, TSR फेमसली नोन एज TSR, टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। टोटल शेयर होल्डर रिटर्न। चलो, एवरीबॉडी ओके विथ इट? सारा, तुषार, मनन ओके विथ इट? वट एवर वी हैव डन अप टिल नाउ, बोलो। चले आगे, टेल मी। ओके, देन लेट्स गो एट TSR, करेक्ट। TSR तो समझना बेस्ट with an example and we'll derive the formula. Write down the example. Mr. A has bought 100 shares of company A at $15 per share. 100 shares of company A at $15 per share. $100 or 100 shares of company at $15, correct? चलो, company A paid a dividend of $2.5 per share. $2.5 per share, correct? During the year. At the end of the year. At the end of the year. At the end of the year, share price of company A is $18.5 per share. ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट द CG कंपोनेंट। CG मतलब, एक मिनट ऐसा लिखो, कैलकुलेट द गेन ऑन शेयर्स फॉर द ईयर। गेन कितना हुआ शेयर्स पे? सी यू बॉट द शेयर्स फॉर हाउ मच? $15, and now it is how much? Tell me. 18.5. So what is the gain for the year per share? बराबर है, बोलो। ओके, कितना? 350? नहीं, मेरे को तो पर शेयर चाहिए, पर शेयर। हाउ मच इज इट? 18.5 माइनस 15, तो कितना गेन हुआ? टेल मी। $3.5। एवरीबडी ओके विथ $3.5? टेल मी, पर शेयर। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नाउ कैलकुलेट टोटल गेन और रिटर्न फ्रॉम द शेयर्स। अभी एक मिनट, यू गॉट टू थिंग्स, करेक्ट? फ्रॉम व्हाट? टेल मी, दिस बाइंग ऑफ शेयर। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट यू गॉट? सर पहले तो क्या मिला? डिविडेंड मिला। डिविडेंड ऑफ हाउ मच? टेल मी। 2.5 प्लस गेन ऑफ हाउ मच? कैन यू टेल मी? डिविडेंड ऑफ 2.5, गेन ऑफ हाउ मच? बोलो। $3.5। बराबर है, 3.5
तो टोटल गेन कितना है? $6 per share, right? And therefore, if I ask you, calculate the return percentage. Return percentage per share. कैसे निकालोगे रिटर्न परसेंटेज? पर शेयर पे यू हैव अर्नड $6. हाउ मच डिड यू इन्वेस्ट पर डॉलर पर शेयर? टेल मी. 15 $. तो कितना हुआ भाई लोग रिटर्न? बताओ मेरे को. अराउंड व्हाट 20? कितना? नहीं 40%. कितना होगा? Yes, 40. $6 बाय $15 कितना? 40%. ओके क्या? यू वुड बी सरप्राइज टू नो. अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि देखो एक सेकेंड, दिस इज ओनली नथिंग बट टोटल शेयर होल्डर रिटर्न. टोटल शेयर होल्डर रिटर्न देख लो इज इक्वल टू, सुनो राइट, फर्स्ट यू एडेड व्हाट? डिविडेंड 2.5, राइट? तो द फॉर्मूला इज टोटल डिविडेंड, करेक्ट, प्लस टोटल डिविडेंड रिसीव्ड प्लस टोटल डिविडेंड रिसीव्ड प्लस ब्रैकेट में. एक मिनट, व्हाट डिड यू डू हियर? टेल मी. This 18.5, was it the share price at the start of the year or when you bought it, or was it the share price at the end of the year? Tell me. 18.5. End of the year. So share price at end of year plus प्लस नहीं सॉरी ब्रैकेट में माइनस. व्हाट डिड यू डिडक्ट फ्रॉम ईयर? 18.5 में से 15. 15 वाज व्हाट? शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द ईयर? Beginning. तो माइनस शेयर प्राइस एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, राइट? अब एक मिनट, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड में इधर खाली लिख लो इंटरिम प्लस फाइनल. मैंने इधर एक ही डिविडेंड दिया, प्लस बोथ हैव टू बी एडेड, इंटरिम प्लस फाइनल. दो टाइप के डिविडेंड होते, राइट? जनरली इंटरिम डिविडेंड, राइट, द होल डिवाइडेड बाय, ऐसा लिखो, द होल डिवाइडेड बाय. व्हाट डिड यू डिवाइडेड बाय? टेल मी. व्हाट वाज $15? शेयर प्राइस एट द बिगिनिंग और शेयर प्राइस एट द एंड? Start of the year. Share price at beginning of the year. You derived the formula, boss. Smart. ऐसा फॉर्मूला डिराइव होता है बॉस, करेक्ट और नॉट? राइट. दिस इज हाउ यू डिराइव फॉर्मूलेस. दिस इज हाउ फॉर्मूलेस वर्कआउट. बराबर है? देख लो, कोई टेंशन? चलो आगे फिर. एनी प्रॉब्लम? चलो, कैन आई गो अहेड? देख लो. Just for a while, could you please scroll up? Done, sir. डन? एवरीबॉडी डन? चले और नो? चलो, ओके, चल. देन लेट्स गो अहेड. हाँ, अब इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या, फाइनल डिविडेंड मतलब क्या? राइट डाउन, इधर ही लिख लो उसके. इंटरिम डिविडेंड, नाउ सी, जनरली डिविडेंड साल में व्हेनेवर इट इज अनाउंस्ड, करेक्ट, डिविडेंड जनरली एनुअल जनरल मीटिंग में एक बार फाइनल डिविडेंड मिलता है जनरली, करेक्ट. बट इंटरिम डिविडेंड, व्हेन डू यू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड? ओके, generally when between two annual general meeting. Last year ka annual general meeting means happens once only, correct? One annual general meeting of last year and this annual general meeting of this year, right? इन दोनों के बीच में if there is super profit, situation हो सकता है that there is super profit, right? Then you could pay interim dividend to the shareholders, correct? तो interim dividend का generally definition is, right, dividend paid between
2 annual general meetings. Dividend paid between 2 annual general meetings. और final dividend यानी क्या होता है? Dividend declared in AGM. AGM is what? Tell me. AGM is your annual general meeting, once which happens in the year. ठीक है? Okay. One more example we have to do. 2-3 example इस पे करने पड़ते हैं. अच्छा, example. Mr. A has purchased shares for $100 per share. Interim dividend is equal to $2 per share. Final dividend $1.2 per share. Correct. Share price at end of year $112.36. Calculate TSR. Can you do it without my help? करो. You have the formula with you. Do it without my help. देखो जमता है क्या? बोलो. How much is it? कितना है भाई? Someone has answered. How much percent? 15.56%. 15.56 TSR. Everybody getting 15.56. One answer we've got is 15.56. Yes, sir. Everybody getting 15.56? Tell me. चलो आगे फिर. Anyone who does not get that answer, should I calculate it for you? बोलो. I don't have a calculator. You will have to do the calculation. I can write the question. I can put the formula up. बोलो. Anyone who's not getting 15.56? Quite straightforward, easy. There might be chances, correct, that this ये plus और ये bracket, you might just mess up this bracket. Plus this minus this. ये कभी I have seen student mess up this bracket. Don't mess up this bracket. Do it in bracket properly and then add it to the total dividend. चलो आगे. Yes, sir. Everybody okay? Anybody who's not got the answer? चलो example. एक और example, then we'll take an advanced example. ठीक है? Share price at beginning $550. Share price at end $543. Interim dividend $10. Correct? Final dividend $1. Calculate TSR. एक मिनट. Can I write this? You can also write here. ठीक है, इसको एक डब्बा बना लो. This is also called as
गेन ऑन शेयर्स और चार्जेबल गेन्स ऑन शेयर्स, चार्जेबल गेन्स ऑन शेयर्स, ठीक है। गेन्स ऑन शेयर्स, चार्जेबल गेन्स ऑन शेयर्स, बोथ वर्डिंग आर ओके, ठीक है क्या। दे हैव यूज समटाइम्स दे हैव यूज चार्जेबल गेन्स, ठीक है। चलो ये कैलकुलेट करो, हाउ मच इज द TSR। Here there is a peculiar thing. Tell me, whatever question we have done up till ऊपर के दो question, right? There was chargeable gain always, but is there a chargeable gain here on the shares or capital loss on the shares? Tell me. Capital loss. Capital loss. There is a loss, boss. Correct. How much is the percentage loss? 0.72%. 0.70%. So how did you do it? Tell me. देखो sir, डिविडेंड मिला $11, करेक्ट, प्लस 550, अभी शेयर प्राइस एट द एंड लेना पड़ता, 543 माइनस 550, सो इट विल बी अ नेगेटिव डिवाइडेड बाय 550, तो कितना आएगा बाबा, टेल मी। 0.7%, ऐसा कुछ आएगा आपका, एक बार वेरीफाई करो, 0.7 नहीं आएगा तो चलेगा, 0.72. 0.72%, 0.72. ठीक है क्या, एनी प्रॉब्लम, टेल मी। चलो एक और एग्जांपल, अब एडवांस एग्जांपल पे जाते हैं, ठीक है। शेयर प्राइस नाउ इज इक्वल टू now is $110, comma, dividend interim $4, final $2, करेक्ट। शेयर प्राइस आफ्टर वो, या ये लिखो TSR इज इक्वल टू 15.4%, कैलकुलेट शेयर प्राइस एट एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर या एंड ऑफ दिस ईयर। यानी मैंने आपको शेयर प्राइस एट द बिगनिंग पूछा है या शेयर प्राइस एट द एंड पूछा है, टेल मी। And ठीक है, तो देयरफॉर डू यू नीड माय हेल्प यार? हाँ एक मिनट, 15.4%, एक मिनट बिफोर वी गो है, करेक्ट, कल ये बोलना भूल गया, हाउ शुड आई राइट इट इन नंबर्स, 0.0154 या 0.154 या 1.54, कैसा लिखना चाहिए नंबर्स में? 0.154. 0.154, Yes. ये वाला, Yes, sir. तो when you are solving this you will have to put up 0.154 is equal to, tell me, डिविडेंड कितना है भाई, $6 का डिविडेंड, प्लस यू डोंट नो शेयर प्राइस एट एंड, तो x माइनस $110, द होल डिवाइडेड बाय व्हाट शुड आई डू, टेल मी, 110 या x, बोलो। 110 इज व्हाट, बिगनिंग और एंड, टेल मी। Start. So 110, therefore x you have to find out, how will you find x, निकालो। 120 plus 120.94. $120.96, everybody getting 120.96, देख लो बाबा। Okay क्या, everybody getting this 120.96, good question or no? आंसर गलत था। गलत है, करो आप, कैलकुलेट करो, कैसे करोगे, देखो जनरली आप क्या करोगे, x I have to find out, correct, so first I will take what, 110 that side, बराबर है, सही आ रहा है, 120.94, एक और जन का आ रहा है, देखो 110 वहां लेके जाऊंगा, करेक्ट, तो क्या होगा, $6 प्लस x माइनस 110 इज इक्वल टू 0.154 इंटू 110, फिर व्हाट यू डू, x इज इक्वल टू
ये भी सिखा दूंगा, वो भी कोई टेंशन नहीं। इंटू 110, करेक्ट। दिस $6 विल गो दैट साइड, -$6 प्लस $110 कितना आएगा? एक सेकेंड, या फिर कितना? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कितना है बाबा? 120.94. 94, ठीक है, 120.94. सर मेरा कैलकुलेशन का ही मिस्टेक था। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 120.94 ओके है क्या? एवरीबॉडी गेटिंग इट? एक और क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम में एक बार आया था, ठीक है। एग्जाम्पल, राइट। उसमें ऐसा था, शेयर प्राइस नाउ इज इक्वल टू $212, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड $5, फाइनल डिविडेंड $6, TSR इज इक्वल टू 12%, 12 नहीं, रुको, 13.2%, करेक्ट। कॉमा, कैलकुलेट शेयर प्राइस ऑफ लास्ट ईयर, और ऐसे कुछ ईयर था 1 ईयर बिफोर, बराबर है। तो आप कैसा कैलकुलेट करोगे? नाउ नाउ नाउ, एक मिनट, ये शेयर प्राइस नाउ, नाउ दिस इज शेयर प्राइस एट द बिगनिंग और शेयर प्राइस एट द एंड। आपको लास्ट ईयर का पूछा है शेयर प्राइस, दैट मीन्स दैट विल बी द ओपनिंग शेयर प्राइस, और 212 विल बी द ओपनिंग शेयर प्राइस। दैट मीन्स, थोड़ा सोचो, थिंक अबाउट इट। हाँ, लास्ट ईयर का भी क्लोजिंग हो जाएगा. लास्ट ईयर का जो है, करेक्ट, 1 ईयर बिफोर बोला अगर, करेक्ट, तो वो शुरुआत हो गया, या 212 इज द स्टार्टिंग पॉइंट? टेल मी। तो 212 एंड पे हो गया ना फिर लास्ट ईयर के साथ. 212 एंड, तो ये जो ढूंढना है वो है शेयर प्राइस एट बिगनिंग इज टू बी फाउंड आउट। बिगनिंग इज इक्वल टू एक्स, राइट। शेयर प्राइस एट एंड कितना है बाबा? 212। समझ में आ रहा है क्या किया है? इधर ऊपर क्या किया है हमने? जो शेयर प्राइस नाउ दिया था वो बिगनिंग था, और हमने शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ दिस ईयर पूछा है, बराबर है। बट एग्जाम में ऐसा उल्टा क्वेश्चन आया था एक बार, सारे बच्चे क्लीन बोल्ड हो गए, ठीक है। देयरफॉर अब आ जाओ, 0.132, 0.132 इज इक्वल टू 0.132 इज इक्वल टू $11 प्लस ब्रैकेट में आराम से 212 माइनस एक्स द होल डिवाइडेड बाय एक्स। ये खाली सॉल्विंग में ध्यान रखना। 0.132x इज इक्वल टू 11 प्लस 212 माइनस एक्स। फिर क्या होगा? ये माइनस एक्स है, वो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस एक्स हो जाएगा। तो 0.132x, करेक्ट, प्लस 1x इज इक्वल टू 11 प्लस 212 कितना होगा? बोलो। 223 ना रे, कितना आएगा बाबा? टेल में 196.99 आएगा क्या? चलो ठीक है, देखो 1.132x इज इक्वल टू 223, यानी x इज इक्वल टू व्हाट? 223 डिवाइड बाय 1.132 कितना आएगा बाबा? टेल में कितना आएगा बाबा? 196.99. 196.99। इसको अगर मैं आंसर पूछता आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट डॉलर, अगर आंसर पूछता टू नियरेस्ट डॉलर, 97. 197. 197, और यही अगर पूछता राउंड डाउन 196. 196। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये क्यों करा रहा हूं? बहुत रीजन है उसका, राइट। मेरे पास एक आधा क्वेश्चन है क्या? टीएसआर कर रहे हैं ना अपन,
आ जाओ जरा, अपने पास क्वेश्चन रेडी है, 1 मिनट। आते क्या जरा, क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? आ जाओ। Sir, question is not visible. नहीं दिख रहा है? आ जाओ। नाउ इज द क्वेश्चन विजिबल? देखो, Yes, sir. होमवर्क में ट्राई कर सकते क्या? देखो सेम क्वेश्चन है। TKQ company has just paid a dividend of $0.21 per share and its share price 1 year ago was 3.1. 1 year ago कितना था? 3.1. The total shareholder 19.7. करंट शेयर प्राइस ढूंढना है। 1 year ago was 3.1, यानी वो शेयर प्राइस एट बिगनिंग है या शेयर प्राइस एट एंड है? Link. बिगनिंग। होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, टेल मी। Yes, sir. ये इधर करना है, होमवर्क में ट्राई करो, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद एक और क्वेश्चन है। हैथवे कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ $0.21 per share and its share price is 3.5 per share. 1 year ago its share price was 3.6. तो TSR निकालो। TSR तो इजी है, ये तो आप कर लोगे, ठीक। लास्ट TKQ सेम है, कह रहे TKQ, ठीक है सेम है। TKQ 21 सेंट्स। हाँ, ये 21 सेंट्स बोला, ये जरा सॉल्व करो। 21 सेंट्स मतलब क्या? देखो, 0.21। हाँ, $1 इज इक्वल टू 100 सेंट्स, लिख लो किधर तो। यानी अगर मैं 21 सेंट्स आपको बोल रहा हूं, राइट, Share तो price at डॉलर में beginning. कितना हुआ? टेल मी। $0.21, ठीक है क्या? देख लो, सारा होमवर्क, तीनों क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन है क्या मेरे पास? सर, हाँ, कहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चंस? कौन से? फाइल, ये वाले। ये मेरे नोट्स में ही ना, आपको नोट्स दूंगा, नोट्स में ही कॉपी पेस्ट किया मैडम, ओके। मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस में और थे क्या मेरे पास? है ना, अपने पास प्रैक्टिस शीट भी है। least likely to solve agency problem, exemption, reporting, ठीक है, ओके। आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कर लोगे होमवर्क में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। TSR हो गया ना अभी। नेक्स्ट हेडिंग एजेंसी थियरी। चलो एक काम करता हूँ, ब्रेक दे दूँ आपको, टेल मी। ब्रेक ले लो, चलो। 7:57 हो गए, 8:15 तक आ जाओ, ठीक है। जल्दी आ जाओ 8:15 तक, ओके।
Hello, everybody, quickly come back. Can we start? Hello. So now what we need to do? Do you want to do theory or do you want to do practical? Tell me that. Accordingly, हाँ, I think कल मैंने लिंक शेयर किया था ना, या नहीं किया? Did I or did I not? Yes, sir, you did. किया ना? Of your notes नहीं किया रे? नोट्स का नहीं किया था, रिकॉर्डिंग का किया था. ठीक है, नोट्स का भी आज कर दूंगा, कोई यूट्यूब प्रॉब्लम नहीं. रिकॉर्डिंग का था सर. हाँ ठीक है, वो भी कर दूंगा आज, नोट्स का भी. ठीक है, यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी कल सुबह हो जाएगी अपलोड. ठीक है, ट्राई करूंगा सर रात जो को लाइव अगर हो क्लास गए. की रिकॉर्डिंग कहाँ से एक्सेस हो सकती है? सॉरी, सर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ से एक्सेस हुई, मतलब उसका भी आप लिंक अभी दोगे व्हाट्सएप ग्रुप पे? नहीं, अभी तक जब तक डेमो चल रहा है तब तक सारा चीज यूट्यूब पे है. ठीक है, एक बार ये वीकेंड पे, अगले वीक में जब एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको एक ऐप है अपना, राइट, रियो प्ले बोल के, वो रियो प्ले के ऐप पे सारे रिकॉर्डिंग्स आपको एक्सेसिबल हो जाएंगे. ओके सर, थैंक यू. ठीक है, कैन वी स्टार्ट? हाँ, नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? वो क्वेश्चन था ना, आपको थियरी करना है या प्रैक्टिकल करना है? कंटिन्यू, या थियरी खत्म कर दे, आज 1 घंटे भर में हो जाएगी. हाँ, थियरी, एवरीबॉडी ओके विथ थियरी? क्या लग रहा है? यस सर. ठीक है, यस सर. कंप्लीट कर ले. तो आ जाओ फिर फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं. आ जाओ, एजेंसी थियरी. देखो वैसे अपने पास एजेंसी थियरी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, राइट, जो एजेंसी थियरी में है वो एक बचा हुआ है. एक बार लेट्स टेक अ इन्वेंटरी चेक. एजेंसी थियरी प्लस मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, करेक्ट, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है क्या? इसके नोट्स मेरे पास रेडी है. एक सेकंड, कैन आई डायरेक्टली कॉपी पेस्ट द नोट्स? आप कॉपी कर लोगे बाद में होमवर्क में? यस चलेगा? सर. तो आई कैन डिस्कस द नोट्स एंड आई कैन डिस्कस द थियरी मोर. आ जाओ, एजेंसी थियरी बोल के हेडिंग दो. आ जाओ. व्हाट इज एजेंसी थियरी? हैव यू हर्ड अबाउट एजेंसी थियरी बिफोर और नो? हैव यू हर्ड और नो? बोलो. नो सर. नो. व्हाट इज एजेंसी थियरी? सिंपल, देर इज अ कॉर्पोरेट व्हील, या इवन इन योर व्हाट, एजेंसी थियरी आपने लॉ नहीं किया ना, एलडब्ल्यू, करेक्ट, कॉर्पोरेट लॉस, राइट. उससे भी पहले देर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एक यस सर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, करेक्ट, वेयर एवरी कॉन्ट्रैक्ट दैट यू एंटर, करेक्ट, पिन से लेके एरोप्लेन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय, करेक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हर एक चीज है. लाइक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. ओके, यू आर सिटिंग फॉर द डेमो, करेक्ट, तुम्हारे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि पहले 5 या 4 या 5 लेक्चर वॉट एवर इट इज, राइट, वो आपको डेमो बोल के दिए जाएंगे. उसके बाद यू हैव टू टेक अ डिसीजन के वेदर यू वांट टू गो अहेड विद द क्लास और नॉट गो अहेड विद द क्लास, राइट. तो इंसिडेंस ऑफ सेल कब होगा? जब आप डेमो के लिए बैठेंगे तब इंसिडेंस ऑफ सेल होगा, या टेल मी आफ्टर द 5 लेक्चर्स जब आप मेरे को पेमेंट करोगे तब सेल कंप्लीट होगा? टेल मी. सर आफ्टर 5 लेक्चर. राइट, आफ्टर 5 लेक्चर में आपको पूछूंगा आपको लेना है नहीं लेना है, आपने बोला सर लेना है, राइट. इफ यू से यू आर रेडी टू टेक इट, राइट, और आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, दैट सर आई एम रेडी टू टेक योर क्लास एट XYZ अमाउंट ऑफ फीस, राइट, काइंडली सेंड मी व्हाट, टेल मी द पेमेंट डिटेल्स, राइट,
मैंने उस पर पेमेंट डिटेल्स भेजे, ठीक है, राइट, आपने पेमेंट मेरे को किया, राइट, या आजकल वो स्कैम चल रहा है, यू जस्ट सेंड अ फोटो, क्या वो स्क्रीनशॉट भेज देते हो, और मैंने आपको एक्सेस दे दिया, मेरे को पैसा नहीं मिला है, राइट, अंडर द प्रीटेक्स्ट कि आपने पैसा दिया, मैंने आपको एक्सेस दे दिया, तो सेल गिना जाएगा क्या? यस। जब भी, अब देखो गुड्स में क्या होता है, ये तो सर्विसेज हो गए, गुड्स में क्या होता है, देखो सिंपल है, थोड़ा सा वाई एम गोइंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कभी कभी कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएगा, ठीक है। आप एक टीवी लेते हो, बराबर है, टीवी लिया आपने, टीवी की डिलीवरी, अब टीवी का क्या है ना, दो चीजों से आप टीवी खरीद सकते हो, मैंने अभी रिसेंटली एक टीवी लिया है, ठीक है, मैंने सोनी का ब्राविया का टीवी लिया है, 50 इंचेस का टीवी लिया है, राइट। तो आपको पता है क्या कि अगर देखो, मैंने आज टीवी के लिए पैसा दिया शॉप ओनर को, बराबर है, शॉप ओनर क्या करेगा, देखो जनरली टीवी आप उठा के लेके जा सकते हो, खुद डिलीवरी ले सकते हो फ्रॉम द शोरूम, बराबर है ना, सब लोग टीवी यस तो देखते हो ना। तो जो टाइम पे आप डिलीवरी लेते हो, जिस टाइम पे आपने बोला ना कि मैं खुद डिलीवरी यहां से लेके जाता हूं, राइट, आप शोरूम के बाहर उतर रहे हो टीवी लेके, राइट, 4-5 स्टेप से आप स्लिप होके गिर गए, किसकी लायबिलिटी है? तुम्हारा लॉस हुआ हमारा या अभी भी? हमारा हाँ, अगर हमारा तुमने लॉस हो डिलीवरी ले ली गुड्स एंड सर्विसेज की, तो क्या हो जाएगा? गुड्स, सेल कंप्लीट सेल कंप्लीट, वहीं पे पैसा दिया, प्रॉपर्टी ले ली अपने पोजीशन में, कंप्लीट। अब दूसरा सिनेरियो बताता हूँ, ठीक है, सुनो, आपने बोला कि ये टीवी ना आप मेरे घर पे डिलीवर कर दो, पैसा मैं दे देता हूं। अब उस शोरूम वाला जो आदमी है वो उतर के नीचे आ रहा था, ही स्लिप्ड एंड फेल डाउन, अब किसका लॉस है? ओनर का। ओनर का। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक गुड्स का सेल कंप्लीट नहीं होता, जब तक मेरे साइड से आपको लेक्चर्स की डिलीवरी नहीं होगी या ग्रुप में एक्सेस नहीं मिलेगा तब तक डिलीवरी खत्म नहीं होगी। एक बार आपने ले लिया, अभी हमारे यहाँ तो अगर आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, या ऐसा कुछ हुआ या आपको कुछ वैलिड रीजन है, राइट, कि आप कुछ बोलते हो, राइट, हम लोग ऐसा नहीं कि रिफंड विफंड नहीं देंगे, रोएंगे, नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आया, देखो 5 लेक्चर में आपको पसंद नहीं आया तो आप लो ही मत, आपको अगर पूरा क्लास खत्म होने के बाद पसंद नहीं आया, ठीक है, तो आपने पूरा का पूरा सर्विस अवेल कर लिया है, उसके बाद आपको रिफंड कैसे मिलेगा? बराबर है, बराबर है। आप अगर 5 क्लास के बाद क्लास लगा दो, 10-15 दिन क्लास लो, फिर आपको लगे नहीं मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, आप मेरे से बात करो, हम चेंज करेंगे कुछ, नहीं तो आपको क्या, रिफंड मिल जाएगा। ऐसे वाला पॉलिसी अगर है तो ठीक है, राइट। ऐसी सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है कि इस चीज में क्या होगा, उस चीज में क्या होगा, सेल की डिलीवरी कब कंप्लीट होगी, गुड्स की डिलीवरी कब कंप्लीट होगी, सारी चीजें। वैसा ही एक टॉपिक है, राइट, शेयर होल्डर यानी एजेंसी थ्योरी। अब एजेंसी थ्योरी का बेस्ट एग्जांपल आई गिव, एवरीबडी हियर ड्राइव्स अ 2 और 4 व्हीलर, राइट, कॉलेज में हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक कुछ चलाते हो, राइट, आपके यस पेरेंट्स सर। ने आपको कुछ ना कुछ वो खरीद के दिया है, बराबर है, प्रोबेबली आपके नाम पे या पेरेंट्स के नाम पे गाड़ी है, दे आर योर गार्डियंस, बराबर है, आपने गाड़ी किधर, यू हैड अस और यू मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट, राइट, एंड सामने वाले का कुछ नुकसान हो जाता है, are you personally liable for what, tell me, the damages, or are your parents personally liable? Parents. हाँ, पेरेंट्स पेरेंट्स, तो पेरेंट्स प्रिंसिपल है, आप अपॉइंटेड एजेंट हो ठीक है, जो भी आप करोगे थर्ड पार्टी के साथ, लायबिलिटी किसकी है? Parents. प्रिंसिपल, बराबर है क्या? ऐसे ही होता है क्या? आप कहीं जाके कुछ कांड करके आते हो, भरना किसको भरना पड़ता है? पेरेंट्स। शेयर होल्डर, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, बराबर है ना। आप उनके अपॉइंटेड, वो क्या है ना, अपने घर का आदमी है, कुछ नहीं कर सकते, अपना ही सिक्का खोटा है। सेम चीज इन अ कंपनी, शेयर होल्डर्स जो है वो ओनर्स है, राइट, बट वो क्या डे टू डे काम करते? नो, दे कैनॉट कम इन टू द कंपनी एंड वर्क डे टू डे, सो दे अपॉइंट डायरेक्टर और मैनेजर्स, डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स आर अपॉइंटेड व्हाट, agents of the shareholders who act on behalf of the principal with the third party. If there is any problem that can happen, who will be liable? Shareholder, यानी कंपनी का। अभी देखो सिंपल,
ठीक है, मैं बताता हूं। इफ देर इज सम प्रॉब्लम विद जियो का नेटवर्क, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? टेल मी। अरे क्या यार, विल यू कर्स द लोकल जियो मार्ट और जियो वॉट एवर रिलायंस जियो का आउटलेट, और विल यू डायरेक्टली कर्स द ओनर? टेल मी। ओनर। ओनर, अरे क्या अंबानी का नेटवर्क, बराबर है ना? बराबर है। दैट इज व्हाट इट इज, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। ओके है क्या? देख लो, प्रिंसिपल Yes, sir. एजेंट रिलेशनशिप। इसमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? दैट मीन्स एज डायरेक्टर्स और मैनेजर्स उनको कोई लायबिलिटी है क्या? टेल मी। दे कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट, बराबर है क्या? इसीलिए एक टर्म है गोल कॉन्ग्रुएंस की। क्या टर्म है? गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस क्या है समझने का जरूरत है। व्हाट इज गोल कॉन्ग्रुएंस? मीन्स व्हाट? एक शेयर होल्डर होता है ना, दैट इज शेयर होल्डर and directors should have their goals aligned. That is, there should be goal congruence. यानी दो गोल जैसे कॉन्ग्रुएंटली चलने चाहिए। मतलब क्या, मैं बताता हूं आपको। जनरली शेयर होल्डर क्या सोचता है? who's owner of the company? That let's say I've invested $100 in this company. I will be the owner of this company for what? Every year company will give me dividend. I will hold these shares for 20-30 years. ये $100 इन्वेस्ट किया, if I hold for 20 years, I should get $10,000 for the shares. Logical भी, investment है, long term investment, correct or not, in the company, right? He wants to be the owner of the company, correct? ये हो गया शेयर होल्डर। नाउ कमिंग टू द डायरेक्टर। डायरेक्टर व्हाट इज थिंकिंग? बॉस, दिस पीपल हैव अपॉइंटेड मी, दिस ईयर दे आर गिविंग मी $10,000 सैलरी, राइट? नेक्स्ट ईयर आई वांट $12,000 सैलरी। ही इज लुकिंग फॉर व्हाट? टेल मी। हिज ओन ईयरली गोल्स, बराबर है क्या? $10,000, 12,000। सही बोल रहा हूं? थिंक अबाउट इट। तो क्या इनके गोल्स अलाइंड है, और आर दे इन डिफरेंट डायरेक्शन? टेल मी। डिफरेंट डायरेक्शन। Your directors will always think in short term what scenarios. Will director take a lot of risk? Because देखो, director का problem क्या है? If director takes a lot of risk, right, and something goes wrong, right, who will be fired first? डायरेक्टर। Director, right? Shareholder क्या बोलेगा? अरे रिस्क लो, मोर मनी। सी, इफ यू टेक टू मच रिस्क, राइट, सो एक सेंटेंस अगर मेरे को लिखना है, राइट, इफ यू टेक अ हाई रिस्क द रिवॉर्ड इज हायर। रिवॉर्ड बोलो या रिटर्न बोलो, हायर है, बराबर है। बट आप रिस्क कम लोगे, इफ रिस्क इज लो, ऑब्वियसली रिवॉर्ड और रिटर्न विल बी लेस। बेसिक रूल ऑफ एफएम, करेक्ट? नाउ सी, इफ यू टेक वेरी हाई रिस्क, आर देयर चांसेस ऑफ अ लॉट ऑफ फेलियर? फेलियर हुआ तो हु विल बी मेड रिस्पॉन्सिबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? डायरेक्टर। फर्स्ट पर्सन टू फायर, डायरेक्टर, बराबर है क्या? तो उस वजह से क्या होगा? द डायरेक्टर इज ऑलवेज नॉट गोइंग टू बी अलाइंड विद द शेयर होल्डर। ही इज गोइंग टू ऑलवेज थिंक ईयर ऑन ईयर, बट इक्विटी शेयर होल्डर 10 ईयर 20 ईयर, बराबर और नॉट? टेल मी, बोलो बोलो। तो यस देर इज सर। लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। देखो जरा, एक मिनट, नोट देखो। देर इज लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। क्या है? बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, गोल्स नॉट इन लाइन। ओके, लैक ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस, दिस इज अ टर्म विच इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बराबर है क्या? चलो आगे मैं। यस सर। नाउ आई टेल यू वन थिंग, ठीक है? अब आएगा पार्ट मैनेजरियल रेम्युनरेशन को। थोड़ा सुन लो, मैनेजरियल रेम्युनरेशन वेरी इंटरेस्टिंग थियरी, ठीक है? इट सीम्स वेरी, व्हेन यू रीड इट नो, तो बहुत ही ज्यादा ब्लैंड है थियरी, करेक्ट? बट इफ यू लॉजिकली अंडरस्टैंड इट, बहुत इजीली याद रहता है। नाउ सी, व्हाट वी यूज्ड टू डू आल्सो, राइट? आई यूज्ड टू वर्क इन फाइनेंस। तो फाइनेंस में ना लोन के टारगेट देते। व्हाट आर द टारगेट ऑफ लोन? ऐसा टारगेट रहता है, देखो, कि यू हैव टू डिसबर्स
right? 15 crores worth of loans in this month. I used to work in finance. तो आप सोचो, giving loan to someone was what a target for a lot of people. मेरे लिए नहीं था, but some people, the colleagues with whom I used to work with, sales people, they had a target, 1.5 crore loan to be disbursed in 1 month, right? Now they were given, right, कि समझो 1 मिनट के लिए ये सेल्स का टारगेट पकड़ लेते हैं, ठीक है, 15 crore sales per month, right? So what was the product? It was a product A, example, right? Product A tha, which has a selling price of $100 per unit, right? Now what happened during the whole month? 15 crore ka target was given, so all managers, directors were given this target. Now what happened? No, by the 27th day, they were only able to do 10 crores. यानी रिमेनिंग 3 days में, 3 or 4 days में, they were required to do additional 5 crores. ठीक है, अब देखो हाउ सिचुएशन इज ऑफ अ मैनेजर एट द मंथ एंड. तो अब नाउ ही हैज रीच्ड 10 crores. हाउ मच इज ही शॉर्ट बाय? 5 crores. अभी 27 days में अगर 10 crore ही हुआ है, तो लॉजिकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली, ट्रू टू गॉड, टू योर हार्ट, टेल मी, विल ही बी एबल टू अचीव हिज टारगेट? होगा ऐसा? No. अचीव करेगा? तो मैनेजमेंट ने बोला है, इफ यू अचीव दिस टारगेट, नो, तो वॉट एवर सेल्स यू डू अबाउ दिस, लेट्स से यू डू 1 crore अबाउ this 15 crore, we will give you 10% incentive. What will give you? Now as a director or manager, I have brought in what? Managerial remuneration in between. बराबर है? तो अब क्या लगता है? Will you be enticed to do something and reach this target so that you can get the 10% incentive? Think about it. So you come to me, sir, देखो ना, उनको मदद किया था वैसे. मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपका प्रोडक्ट है ना, $100 पर यूनिट है ना, मेरे पास आई हैव वन गाय, इफ यू रिड्यूस द प्राइस टू $80 पर यूनिट, करेक्ट, ही विल बाय 20 crores का माल अभी के अभी, तुरंत. डायरेक्टर गॉन मैड, राइट? 20 बहुत ज्यादा हो गया, 10 crore, राइट? तो व्हाट इज ही थिंकिंग? अरे 27th को सर इज टेलिंग, मैं 27 days में आई गॉट 10 crore, इन 3 days आई कैन कंप्लीट माई टारगेट, plus additional 5 crores I can on that 10% I can earn. Think about it, no? But when analysis was done, this $100 per unit, $70 per unit was cost. What was it? And $30 का profit था on this. $70 was the cost, $30 was the profit. Now if you reduce the selling price, then will you have any profit? Tell me. Yeah, we have the profit for 10. Profit will shrink down, correct? But company will be so happy, 20 crores का सेल हो गया, correct? So total sale 10 crores plus 20 crores. But when company and also incentive to be paid, correct or not? So incentive to be paid, अरे बढ़िया sir, very good incentive to be paid. But tell me, when company analyzed, right? Company found out that, boss, what is happening? The profit should have been $30 per unit, but how much is the profit? Average profit अभी उनका $12 per unit आ रहा है because of this $20, right? And then उसमें से they also have to pay incentive. So is it a good perspective for the company? Tell me. As a whole, is it a good perspective? Think about it. या लॉस में जाएगा कंपनी? Tell me. Loss तो नहीं होगा sir, but a kind of, Yes, but it will be a loss in the profit the company could have earned, correct or not? हाँ, Right? ऊपर से you also have to pay incentive, exactly. correct? For what? Remaining that 5 crore पे 10%, right? 50 lakh rupees incentive, right? And probably profit कम हुआ है, right, by 1 crore. यानी loss company का 1.5 crore हुआ है. Example दे रहा हूँ, correct? So would company be very happy with these kind of practices where directors manipulate the managerial remuneration, right, to meet their targets? What do you say? Will company be very happy? Honestly tell me. Yeah. No. So thus company wants managerial remuneration. Now what does company do? ये महीने में company को पता चल गया. Next year or next month company does what? We are not giving you sales target. No. Right? We are giving you that per unit, correct?
per unit selling price would be fixed at $100, or we would say that we want $30 profit per unit. $30 per unit profit, correct? And then you sell the material, right? And for that you give, let's say, 5 crore का profit होना चाहिए, example, correct? So what is better, giving a sales का target without deciding what selling price or profit should be, or what is better, giving profit का target? Tell me. Profit per target. Profit per per target. unit. Can this be easily manipulated? Tell me. No. No, sir. You have clearly defined it कि मेरे को हर यूनिट के पीछे $30 चाहिए, right? And plus your target is profit का 5 crore. Means you have clearly defined. अभी तुम see, can you sell anything above $30 per unit profit? Yes. This is minimum profit you need per unit. Boss, you cannot manipulate this. It is clearly defined. Difficult what to manipulate, or impossible to manipulate. Correct or not? Tell me. So managerial remuneration में the policy that you use, correct? The managerial remuneration का policy, should it be clearly defined? Yes. Should it be what? Now see, someone in the meeting also said, sir, सिर्फ profit से link मत करो. Also link this with shareholder wealth maximization. यानी shareholders value going up या shares का value going up. See, if you do good sales, right, you earn good profits, will your shares का value go up? Tell me. Yes, sir. So better link profit से भी नहीं, sales से भी नहीं, link your managerial remuneration with what? Tell me. Shareholder wealth maximization. If you do good business, share का price increases, you will get incentive. बराबर है क्या? तो have a look, 3-4 points, right, that are there. Managerial remuneration factors to consider. एक मिनट आ जाओ, इसका नोट्स वेट. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड स्कीम. क्या बोला है? फैक्टर्स टू कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग अ मैनेजरियल रिवॉर्ड स्कीम शुड बी क्लियरली डिफाइंड, इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट एंड इजी टू मॉनिटर. ये 3 पॉइंट ओके है क्या? पहले रीड कर लो. क्लियरली डिफाइंड, इम्पॉसिबल टू मैनिपुलेट, इजी टू मॉनिटर. ओके, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. मैचिंग टाइम होराइजन ऑफ मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर. अरे सर, शेयर होल्डर इज थिंकिंग 20 years, मैनेजर इज थिंकिंग व्हाट? 20 years or only 1 year? Tell me. A year only. A year only. My salary should increase. अरे but if company does well, obviously your salary will increase. बराबर है क्या? देख लो. Third point, managers should be encouraged to take more risk like shareholders. Correct? So shareholder want to take a lot of risk, earn lot of money, share value increase करना है. But are managers motivated enough? No. So because if they take a lot of risk, no, and it fails, they will be fired first. इस वजह से they may not take a risk. And last, link reward to shareholder wealth maximization. बराबर है क्या? अरे सर, बहुत बार कर चुके हम ये. करेक्ट. आर ऑल द स्टोरीज कमिंग टुगेदर हियर? टेल मी. लिखना है आपको? 2 मिनट टाइम दे तो लिख लो. टुडे आई विल गो अप टू 9:15. चलेगा? Yes, sir. Sir, आप explain कर दीजिए. We'll do it afterwards. लिख लोगे बाद में? एवरीबॉडी ओके? या मेरे को लिखाना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको मैं तो 2 फिर मिनट बाद में लिख लेंगे. लिख लोगे? राइट, ठीक है. अब ना, देर इज अ टॉपिक ऑफ ईसॉप्स हियर. ईसॉप्स सुना है आपने ईसॉप के बारे में? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. नाउ व्हाट डिड दे से? दैट सर, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन देने से अच्छा ना, व्हाट यू डू नाउ. सी, आई विल टेल यू वन थिंग. इफ यू आर एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, राइट, will you work as hard as the owner of the company? Tell me. Think about it. No. No. But if you are working here and you also have ownership in the company, your partner or let's say part owner 10-20%, will you work very hard? Tell me.
So for that, what did people do? Employee stock option plans, or famously called as ESOPs, are given to employees, right? Now, sir, who are given what? ESOPs. आ जाओ जरा एक मिनट. I'll keep the notes here. Let me explain. Okay. Now tell me, you have joined today in the company, right? You have started working, 1 or 2 months have happened. Will you get ESOPs of the company? Are you given an opportunity, or should you be given an opportunity to be owner of the company? No, sir. No. No. So basically ESOPs किसको मिलेगा? The employees whom you trust blindly. क्या बोल रहा हूं मैं? Employees whom you trust blindly. हो सकता है, or at least they have done 2-3 years with you and you know those employees. Only those employees, or employees who are loyal to you and who have not left the job in 6 months or 1 year or 2 years or 3 years, have been with you. Correct? Tell me, would you prefer giving ESOPs to them or to people who are just 2-3 months old? Tell me. ESOPs मतलब क्या? You are going to make them owner of the company. Correct or not? So generally employees, right, equity share are issued to employees who work in the organization for some minimum period, which is decided in the ESOP plan. Now, when the issue is to be done, now let's say you said, sir, whoever works 5 years with us now, or has worked 5 years with us, will get ESOPs, sir. They will only get ESOPs. Because, sir, no, once they become owner, they will work more hard. Correct or not? बराबर बोल रहा हूँ? Happens? Yes or no? देखो बहुत बड़े बड़े बैंक्स है ना. आई हैव सीन पीपल, माय कलीग्स, राइट. आई वाज नॉट वर्किंग इन अ बैंक, बट माय कलीग्स वर ऑल वर्किंग इन बैंक्स, राइट. सो वन कलीग ऑफ माइन वाज वर्किंग इन यस बैंक. मालूम है यस बैंक? आइडिया है? यस और नो? सुना है यस बैंक? राणा कपूर, टेल मी. सुना है? Yes, sir. तो दैट बैंक दैट वाज देयर, वो अगले पिछले 5-7 साल में बंद हो गया ना बैंक. आई थिंक 7 मिनट 10 साल, अभी 10 साल पहले देयर वाज अ फ्रॉड इन दैट कंपनी. 10 नहीं, कितने, 20 में, नहीं 5 साल पहले, 4-5 साल पहले, राइट. यस बैंक. सो ही वर्क इन यस बैंक फॉर 9 ईयर्स, नहीं 11 ईयर्स. तो आफ्टर कंप्लीटिंग 7 ईयर्स ही गॉट ESOP का ऑप्शन. मीन्स व्हाट? ही कैन बाय शेयर्स ऑफ कंपनी. बट सर, आप ये क्या बोल रहे हो? शेयर्स ऑफ द कंपनी कैन बी बॉट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो. टेल मी. अगर मैं आज कोई कंपनी ज्वाइन करता हूं, क्या मैं उसके स्टॉक्स फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज खरीद सकता हूं क्या? यस और नो? बोलो. यस सर. यस. बट फिर ESOP का क्या यूज? ESOP में सेकेंड पॉइंट, शेयर्स आर गिवन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस इन ESOPs. अगर मार्केट प्राइस अभी स्टॉक मार्केट में $100 है, एम्प्लॉयज विल गेट द सेम स्टॉक्स एट $60 या $50 एट अ हेवी डिस्काउंट. करेक्ट और नॉट? तो कंपनी इज गिविंग शेयर्स टू द एम्प्लॉयज, राइट, टू लॉयल एम्प्लॉयज, एंड क्या बोलूं मैं? टेल मी. एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. ठीक है क्या? उसके बाद देयर इज ऑल्सो अ होल्डिंग पीरियड. सो द पर्सन हु हैड बॉट शेयर्स, तो उसने क्या किया? देयर वाज अ 12 ईयर प्लान कंपनी में, 12 या 11 ईयर प्लान, करेक्ट, कि एट द एंड ऑफ 7th ईयर यू विल गेट ESOPs. ESOPs विल बी, वो टाइम पे ESOPs 80% डिस्काउंट पे मिले थे, राइट. एंड आफ्टर 4 ईयर, इफ यू सर्वाइव 4 more years, उसके बाद देन यू आर अलाउड टू सेल द शेयर्स एट सर्टन, व्हाट लॉक इन पीरियड था, 3 years का या 2 years का. दैट मीन्स जस्ट आफ्टर गेटिंग द ओनरशिप यू कैनॉट लीव द बैंक, यू हैव टू स्टे आफ्टर दैट ऑल्सो फॉर यू टू व्हाट, सेल दो शेयर्स. तो उसके बाद 3 years का लॉक इन पीरियड होता है. आफ्टर दैट यू आर ऑथोराइज टू व्हाट, सेल द शेयर्स. करेक्ट? तो ऐसा होता है. तो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर मीटिंग ESOPs, देन डिस्काउंट पे ESOPs मिलेंगे, एंड देन यू हैव टू हैव अ मैंडेटरी पीरियड आफ्टर इट, लॉक इन पीरियड, आफ्टर विच यू कैन सेल द शेयर्स, राइट. एम्प्लॉयज को ये सारे ऑप्शन होते हैं, बराबर है. सो एम्प्लॉयज बिकम व्हाट, पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी. सही है क्या? देख लो. एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम विद एनी 4 points ESOPs? Why is it done? It's a method of managerial remuneration. It is done so that managers का क्या हो? Tell me. They are interested into the company. ठीक है, देख लो.
सर ओके ESOPs मिलने के बाद एम्प्लॉय कभी भी कंपनी छोड़ सकता है? नहीं, वही मैं बोला ना, अगर उसको सेल करने के लिए आफ्टर दैट उसको मैंडेटरी लॉक इन पीरियड रहना पड़ता है। सर तो उस लॉक इन पीरियड में वो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं छोड़ सकता कंपनी से? एम्प्लॉयमेंट भी नहीं छोड़ सकता और शेयर्स भी नहीं बेच सकता। तो अगर आप ईसॉप लेते हो तो थोड़ा सोच के लेना। हाँ, सब जगह ये रूल नहीं है, राइट? इट्स अ व्हाट, टेल मी, कंपल्सरी रूल नहीं, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज, जैसे सोचो ना आप, यू आर मेकिंग समवन ओनर, नेक्स्ट डे ही लीव्स द जॉब, क्या करोगे आप? उसको डिस्काउंट में शेयर भी दे दिए एंड ही लीव्स द कंपनी। आप किसी को ओनर क्यों बनाते हो? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट से वो थोड़ा उठ के ऊपर है, करेक्ट है, ज्यादा काम करे, राइट? इसलिए मैं बोलता हूँ ईसॉप्स कभी भी नहीं लेने के, अनलिस्टेड कंपनी के ईसॉप्स। नाउ व्हाट डू स्टार्टअप्स डू? ईसॉप्स दे देते, राइट, अच्छी खासी अमाउंट का, राइट? अब यू नो एवरीथिंग अबाउट ईसॉप्स, आ जाओ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईसॉप्स, इधर ही नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज विजिबल टू यू? देखो प्लीज, विजिबल है बेटा? यस सर। एडवांटेज डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या है? एम्प्लॉय विल गेट व्हाट, अ सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ इन कंपनी। कंपनी के लिए क्या है? भले ही डिस्काउंटेड प्राइस, बट इज कंपनी गेटिंग सम मनी आउट ऑफ द ईसॉप इशू? थिंक अबाउट इट, $100 का शेयर, करेक्ट, कंपनी सेलिंग एट लेट्स से $50, तो भी $50 भी तो, इज इट कमिंग इनटू द पॉकेट ऑफ द कंपनी? टेल मी। So company will be able to raise capital through ESOP issue, right? But see, when you do a stock market पे proper issue, IPO या FPO करते हो, initial public offer और further public offer, correct? If you do that, right, तो कितना सारा खर्चा लगता है, आइडिया है आपको? To list a company, correct? How much is the expense? और what are the different expenses that you have to do? थोड़ा सोचो। Do you know? There is something called as prospectus, मालूम है? Prospectus, आइडिया है? What is a prospectus? यस सर। So whoever company wants to list their shares, so what you're doing basically is, when you're listing shares, you are opening your shares for what? The public. So public money will be invested in your business. So the SEBI or the Securities Exchange Board of India, right, will take a lot of care because public money is involved. So they will ask you 100 documents, right, for listing. They will say give a what, full page ad on what, some newspaper, all that cost is very high. Do a prospectus issue, right? Then hire an undertaker, undertaker नहीं, underwriter, ठीक है, बराबर है। underwriter, मालूम है आपको underwriter? underwriter is a agent who sells your share, right? अभी मेरे को, मैं WWE मोड में जा रहा हूँ, ठीक है, right? underwriter, correct? तो all these costs are there, it's a very costly affair. But if you directly issue shares to employee, right, it's an internal affair. Do you have to do a lot of expenses? Not really. Save costs, correct? Disadvantage. Now see, सर you become, हाँ सर तो ESOP के अंदर कंपनी जरूरी है कि नए शेयर इशू करेगी या फिर हाँ, जो पहले obviously, से स्टॉक मार्केट में नहीं है नहीं, वही new करें या shares, फिर ये? new stocks, boss. ओके। See, whenever an issue happens, issue will happen of new stocks, obviously, correct? Right? अब देखो, आप एम्प्लॉय हो रिलायंस के, सुनो, रिलायंस ने आपको ईसॉप दिए 10,000 शेयर्स के, रिलायंस के है कुछ 5-10 करोड़ शेयर, आप 10,000 शेयर्स के ओनर हो, आप, यू आर वर्किंग 24 आवर्स अ डे, राइट? उससे क्या कंपनी बहुत बड़ी हो जाने वाली क्या? थिंक अबाउट इट। नो सर। अब 24/7 यू वर्क, तो नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, शेयर प्राइस एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एम्प्लॉय। ये देखो, ये, अरे कोई रिलेशनशिप है ही नहीं बॉस, करेक्ट? बहुत बार ऐसा हमने देखा है, ठीक है? एक बार ऐसा मैंने ईसॉप के बारे में सुना है, दैट $100 वॉज द मार्केट वैल्यू पर शेयर, ओके? सुनो, ईसॉप वॉज गिवन एट $40 टू एम्प्लॉयज। अब क्या हुआ, मार्केट में खबर फैल गई दैट ए कंपनी इज डूइंग अ ईसॉप इशू, करेक्ट? जनरली कुछ बार मार्केट परसिस्ट और मार्केट विल टेक दिस इशू एज अ क्राई फ्रॉम द कंपनी दैट कंपनी नीड्स मनी, ऐसा हो सकता है, राइट? एट टाइम्स अ लॉट ऑफ ईसॉप्स हैव फेल्ड बिकॉज व्हाट हैपेंस,
मार्केट फील्स दैट अरे तुमको एम्प्लॉय से पैसा लेना पड़ रहा है, करेक्ट, दैट मीन्स कंपनी इज नॉट डूइंग वेरी वेल. If you had a lot of confidence and you needed money, you would have gone to the market again. But तुमको ज्यादा confidence है नहीं, so you are taking money from what? Employees. उस केस में $40 में जो इशू होता है ना, फट से शेयर प्राइस 100 से $60 पे आ जाती है. हो तो हुआ है, लोअर सर्किट लगे बहुत कंपनीज को आफ्टर ESOP इशू, बिकॉज मार्केट में नॉट टेक द न्यूज ऑफ ESOP इशू दैट मच नाइसली, and the employee who thinks that he is getting a $100 share for $40, and next day how much is the value of the share? Bolo, $60. Now does it sound a very good, what, tell me, No. proposition? Not really. हो सकता है उसके बाद सच में प्रॉब्लम हो इन द कंपनी विच गेट्स एक्सपोज इन द नेक्स्ट मंथ और समथिंग, करेक्ट, और शेयर $30 पे चला जाए, हो सकता है, हुआ है, करेक्ट. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फेल्ड ESOPs. तो इस केस में क्या करोगे? क्या अंडर वाटर एक टर्म है, करेक्ट. देखो, द शेयर वैल्यू में गो अंडर वाटर आफ्टर ESOP इशू. शेयर वैल्यू कहां चला जाएगा? अंडर वाटर. होता है सब बहुत बार, आई हैव सीन इट न्यूमरस नंबर ऑफ टाइम्स, करेक्ट, हो जाएगा, राइट. अब ना, नाउ सी यू से सर, देखो आपने बोला कि सर एक एम्प्लॉय है जो मिस्टर एक्स, ही वर्क 7 years एंड उसके बाद उसको और लॉक इन 2 years काम करना है, आफ्टर दैट ही कैन सेल द शेयर्स. यही बोला था मैंने आपको, टेल मी. नाउ Yes. ESOP पॉलिसी जो होती है ESOP की, करेक्ट, इज मेड बाय डायरेक्टर्स फॉर एम्प्लॉयज, राइट. मैनेजर्स के ऊपर ये लॉक इन पीरियड कभी कभी अप्लाई नहीं करता. इफ डायरेक्टर्स, क्योंकि देखो ESOP का जो चार्टर, देयर इज अ व्हाट रूल बुक मेड फॉर द ESOP, करेक्ट. द इशू विल हैपन एट दिस रेट, मार्केट वैल्यू इज दिस मच, वो सब करके वो लोग एक चार्टर बना के आपको देते हैं, राइट. उसमें कभी कभी ना डायरेक्टर का नाम नहीं होता इन लॉक इन पीरियड. तो डायरेक्टर क्या करते हैं, देखो $100 का शेयर $40 में खरीद लिया, इट डज नॉट गो अंडर वाटर, नेक्स्ट डे इसको $100 में बेच दिया इन द मार्केट. आ गया ना, कितना पैसा आया आपको तुरंत? $60 पर शेयर का प्रॉफिट. बी अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, डू एन ESOP इशू, डिस्काउंट में शेयर खरीद लो, करेक्ट. लॉक इन पीरियड मे नॉट अप्लाई टू सर्टन डायरेक्टर्स एंड देन मे सेल द शेयर्स इमीडिएटली आफ्टर ESOP इशू. पैसा ही पैसा होगा, बराबर है क्या? ओके. नाउ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल, थोड़ा डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल एक अलग प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, राइट. देखो, देर इज अ कंपनी, राइट, विच हैज अ कैपिटल ऑफ $5 million, करेक्ट. each Mr. A, B, C, D and E individually bought $1 million into the company, and they decided that boss, everyone will be 20% owner in the company. Okay है क्या? Tell me. 20% owner. Now what happens? Company requires money. हो सकता है he is doing good, they are doing good, but they need money for expansion. So they take extra $5 million from outside. Some person wants to buy a stake in the company, so he also invests $5 million in the company now, correct. This is a later on offer, correct. And hence he says, देखो boss, you all bought 1 million, you have 20%, I have bought 5 million, now total capital is $10 million. Now I am 50% owner of the company, correct, and you all are at what? पहले जो कंपनी के ओनर्स थे, मिस्टर ABCD, have now become what? Mere 50% owner, right? Can they pass any decision without asking F? Tell me. First they had full control of the company, these 5 people. Now who has full control of the company? F. Without asking him. आप कोई नॉर्मल चीज भी नहीं कर सकते, बिकॉज मोर देन 50% वोट विल बी रिक्वायर्ड. ABCD कैन डू द 50% वोट, but 51% vote are required. F के वोट के बगैर can they pass any resolution? Have they diluted their control by issuing extra equity shares? देखो जरा, लफड़ा. What do you say? That is dilution of control. It may so happen if you give shares to the employees. देखो, ESOPs may lead to dilution of control. Existing shareholder may lose their ownership certain percentage to the employees. एक बार रीड मार लो,
See whether you are okay with it. Any problem in the advantage or disadvantage? I'll again re-explain the point if you have not understood it. Bolo. Advantage, disadvantage. Both the points, have a look. Does it make sense or not make sense? आप पढ़ो, ठीक है? Once you're done, let me know. Questions have come up on this, huh, in the exam. That's why I'm taking it. नहीं तो मेरे को मजा नहीं आ रहा है. Okay. ओके या लिखाओ, बोलो. मेरे को आई एम ओके विथ राइटिंग इट. मेरे को पहले ही बोलो. आफ्टरवर्ड्स आई डोंट वांट दैट सर ने ऐसा क्या लिखा है, नहीं वो सब नहीं चाहिए. आई एम रेडी टू राइट. बोलो. ओके है या कोई प्रॉब्लम? हम्म. कैन आई गो अहेड गाइस? ओके शबनम, रेडिट. Okay. चलो आगे. वंश, मनन, क्या लगता है? ओके विथ इट? सृष्टि, ऑर्डरली को ऐड बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. आयुषी ओके. कनिका मैडम Yes. ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आ जाओ. एक स्टोरी बताता हूँ आपको. राइट. हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू द रिसेंट मुंबई का एक मेट्रो चालू हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू दैट मेट्रो? मालूम है? रिसेंटली मुंबई में एक मेट्रो चालू है. बोरीवली Yes, से sir. पास ऑन होता है, बराबर है? हाँ, कितने लोग मुंबई से? हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम? मैं सर. हाँ, आशीष, राइट. वो उसमें देयर वाज अ प्रपोज्ड प्लान. In Mumbai, there is a forest named as RA forest. Any idea about that, आशीष? तो एक प्रपोज रूट Yes, sir. था जहां पे दिस मेट्रो वाज गोइंग टू पास थ्रू द RA फॉरेस्ट एंड अराउंड कुछ, अब नंबर मेरे को याद नहीं, बट अराउंड 500 प्लस ट्रीज वर गोइंग टू बी कट फॉर दिस. ऐसा एक प्रपोज प्लान था, राइट, कि RA फॉरेस्ट के ना सर 500 से ज्यादा पेड़ कट जाने चाहिए for this metro to go. Obviously it would have saved 20 minutes 30 minutes of time of the people. तो हुआ क्या, that these kind of things, now see when you are going to cut 500 trees, right, तो BMC ने कुछ टेंडर निकाला था, प्रपोज रूट वो था, एंड दे हैड अवॉर्डेड अ टेंडर टू सम XYZ कंपनी. करेक्ट, राइट. अब XYZ कंपनी ने क्या किया, एक्चुअली इट इज अ एनवायरमेंटल इशू. Without taking environmental clearance, they cannot start cutting trees just because they have been awarded the contract by BMC. But what they did, no, they were a very dangerous company. उन्होंने क्या किया, the day they received the BMC का contract, they called for a meeting of the directors. Board of director meeting एक इशू होता है, बराबर है, राइट. XYZ कंपनी का ओनर मिस्टर एक्स था, एग्जाम्पल, करेक्ट. He was the chairman of the company, chairman of the meeting, everything, right? He and 10 other directors plus Mr. X, all जैसे ही 12-1 बजे दोपहर को they got that circular that they have been awarded the contract. They knew that वो केस एनवायरमेंट में अगर फंसा तो they will not be able to do any work, right? 11:30 or 12 they got the contract, correct?
उन्होंने क्या किया 11:30 को, राइट, या 11:15 11:10 को 10-15 मिनट में दे केप्ट द रिजोल्यूशन रेडी कि जैसे ही वी गेट द कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट मिनट वी विल स्टार्ट कटिंग ट्रीज, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट और एनवायरमेंट में अटक गया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल गो अवे एंड दे विल नॉट गेट द मनी. सो उन्होंने इलीगली एक क्या किया, दे मेड अ रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन मतलब क्या, they ask everyone in the board of directors that boss we are doing this work and from 10:15 or 12:15 we are starting cutting of trees, and they started cutting trees. 100+ trees उन्होंने काट भी दिए, right, and a lot of people got to know it. People were very angry, correct, and they straight away went to Supreme Court. तुरंत 2 घंटे में, 2-3 घंटे में, राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट को बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड दीज ट्रीज हैव टू बी, और एक्चुअली इट इज एन एनवायरमेंट इशू, दिस कंपनी डिड नॉट टेक एनी व्हाट परमिशन, राइट. तो दिस मिस्टर एक्स वाज कॉल्ड इन द कोर्ट. मिस्टर एक्स ने बोला सर आवर कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, वी हैव पास्ड अ रिजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, वी हैव गॉट कॉन्ट्रैक्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकारा कि भाई ऐसा कोई इलीगल क्या, टेल मी, कोई भी illegal resolution cannot be passed in the board of directors, right, without taking proper permission. Taking a resolution does not mean, your internal resolution does not mean that you can start cutting trees. उन्होंने बोला no sir, I have these 10 directors who work at my place, who are, I have 10 departments in my company, right, as per law, correct, if a resolution is passed and I have the contract, correct, I can start cutting trees. तो बहुत सारा उस पर क्या हुआ, वाद विवाद हुआ, राइट, एंड एट द एंड ऑल द जजेस व्हाट सेड दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्गर लॉ. नहीं तो ऐसा कोई भी क्या बोलेगा, कंपनी का रिजोल्यूशन है, राइट, इज अबाउ द लॉ, राइट, एंड दे विल डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, इलीगल एक्टिविटी, एंड इट इज अ लिस्टेड कंपनी, सो पब्लिक मनी इज वॉट इन्वेस्टेड हियर. तो समथिंग और द अदर वी हैव टू डू बॉस, नहीं तो क्या हो जाएगा, टेल मी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट. सो दे केम विथ व्हाट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स. सो दे सेड व्हाट बॉस, सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हु आर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सुन लो जरा, करेक्ट, आई हैव एवरीथिंग रिटन, डोंट वरी. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर हु वर्क्स फुल टाइम इन द कंपनी, correct. Executive means what, he is working in the company full time, right, and his salary and everything is on the, that Mr. X decided salary and everything. So in this case if he votes against Mr. X, will Mr. X be happy? Think about it, think about it. Your boss asks for your vote and says that I feel that project should be done, and you say no, the project should not be done, will he keep you employed? Think about it. No. He will fire you. So executive directors have to be under duress of what, the MD or owner of the company, managing director or what, CEO of the company, correct. So the law said देखो executive director ना आप रखो, but we want non-executive directors who are not employed by the company. उसमें भी we want them to be independent. We want what, independent non-executive directors. Means what, that those people should not be interested into the company at all, right. So what will happen, no, because of that they can take a unbiased decision, right. Executive directors have to be biased towards Mr. X. So they said that first, sir, there are 11 people, we want 51% or more independent non-executive directors in the company. देखो जरा एक मिनट, read this part. We want what, 50% or more or 51 and more, correct. 50% or more of the board of directors should be consist of INDs. Means see, if in that situation 11 directors were there, more than 50% should have been INDs. So 6 directors अगर IND होते, correct, and they would have voted against cutting the trees, तो ये trees का cutting होता क्या? Think about it. No sir. नहीं होता. So hence law was required for listed companies to have 50% or more, right, board of directors to be INDs. INDs means what, independent non-executive directors. बराबर है क्या? फिर क्या हुआ,
अब this rule was passed, correct? Mr. X got to know all this. So now next meeting में क्या था? Have a look how the composition of the board was, correct? 11 directors, these 6 INEDs, correct? Right? उसमें से एक आया नहीं था, correct? And remaining 4 directors and 1 director, Mr. X. Okay. Mr. X is the chairman of meeting of board of directors. देखो कैसे होता है. How do people play with the law? Chairman of meeting of board of directors. Now what happened? One IND could not come. ठीक है. So these 5 voted against cutting the trees. These 4 voted for cutting. Mr. X also for cutting. तो अब क्या हो गया? 5 versus 5 हो गया. Is there a tie? Tell me. Now अब इस केस में क्या होगा? Tell me. इस केस में law says that chairman of the meeting no has a veto power. क्या होता है? Now everyone knows what is veto power. Tell me. He has 2 votes. He has 2 votes. In case of a tie, whatever his vote is, he has a second vote. If he says okay, right, I am going this side, then he has that is called as a veto power. Veto power means what? In case of a divided house, you have a last vote. बराबर है. तो Mr. X has the last vote. तो 5 versus 5 हो गया. Mr. X says what? Cut the trees, and they manipulated the law like this. Correct? मिस्टर एक्स को चेयरमैन कर देने का, 1 IND को क्या करने का? टेल हिम नॉट टू कम. करेक्ट? पे हिम सम मनी. 5 वर्सेस 5 हो जाएगा. मिस्टर एक्स विल हैव द फाइनल से, एंड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ऑलवेज विल बी मिस्टर एक्स ओनली. इसीलिए फिर लॉ केम अप विद द सेकंड प्रोविजन. क्या है सेकंड प्रोविजन? देखो, एमडी ऑफ द कंपनी एंड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग क्या नहीं होना चाहिए? टेल मी. यानी कैन मिस्टर एक्स एवर बी चेयरमैन ऑफ मीटिंग? बोलो. नेवर एवर. आते हैं ये पॉइंट्स, आपको लग रहा है बट एमसीक्यू में आता है. करेक्ट? ओके क्या? देखो, चेयरमैन ऑफ मीटिंग एंड एमडी ऑफ कंपनी शुड नॉट बी द सेम. ओके क्या? देख लो एक बार. 50% और मोर INDs. यू नो नाउ व्हाट द पर्पस ऑफ कीपिंग दिस प्रोविजन. समझ में आ रहा है? अब ना उसके बाद लॉ ने बोला देखो, दीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, अब पहले एक मिनट, INDs. करेक्ट? INDs ऐसा फ्री में आके बैठेंगे क्या? ऐसा फ्री बैठे थे घर पे बोल के कोई मीटिंग में बिठा दिया, ऐसा फ्री में आएंगे क्या? या उनको सैलरी मिलेगी कंपनी से? थिंक अबाउट इट. सैलरी मिलेगी. अगर सैलरी मिलेगी तो विल दे वोट अगेंस्ट मिस्टर एक्स? गवर्नमेंट हायर करेगा उनको. हाँ, सर गवर्नमेंट नहीं देता मैडम, गवर्नमेंट नहीं देता. सर रेम्यूनरेशन मिलेगी मीटिंग में आने की. रेम्यूनरेशन मिलती है, उसको बोलते हैं सिटिंग फीस. क्या बोलते हैं? उनको सैलरी नहीं मिलती, बट INDs आर गिवन व्हाट? सिटिंग. ये देखो, सिटिंग फीस देखिए, फॉर अटेंडिंग मीटिंग इज पेड टू INDs. नो सैलरी. फीस वी कैन से. हाँ, काइंड ऑफ प्रोफेशनल फीस वी कैन. काइंड ऑफ प्रोफेशनल फीस. करेक्ट? बिकॉज कोई भी फ्री में आके नहीं बैठेगा, राइट? उनको सम फी, बट उनको आप मंथली पे नहीं कर सकते. वेन एवर इज कमिंग एंड सिटिंग इन द मीटिंग, उसका प्रोफेशनल फीस यू कैन पे. करेक्ट? अब ना फिर उसके बाद क्या हुआ? मिस्टर एक्स को पता चला ये सब कोई लॉ मैनिपुलेट नहीं हो सकता. मिस्टर ए बोला आई विल बी डायरेक्टर फॉर लाइफ. मेरे को डायरेक्टरशिप से, नो वन कैन एवर फायर मी फ्रॉम डायरेक्टरशिप. डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. आई एम द किंग. मैं ही राजा, मैं ही प्रजा. करेक्ट और नॉट? टेल मी. नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर मी. सो लॉ केम अप विथ वन मोर प्रोविजन. क्या थी वो प्रोविजन? रीड दिस. क्या है? एवरी डायरेक्टर शुड नॉमिनेट हिमसेल्फ for reappointment at least every 3 years. No one can be what? King for the whole life. बराबर है? ओके क्या? देख लो. Now what happened? Right? This NAD का सब झंझट चल रहा था. Right? They said no cutting trees. Correct? Or some illegal activity. Right? Mr. X said to all the executive directors, टेंशन मत लो, तुम करो, cut the trees. We'll see. Audit में देख लेंगे. Where we will see? Tell me. When we do audit, no, at that time I'll get the chartered accountant, right? He will. या उन्होंने कोई financial fraud किया. You don't worry. In audit I will manage all this. These idiot INDs sitting fees pay कर दो, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा. Correct? They will not understand. Public money we will use anyway. We'll do fraud. Correct? तो audit में संभाल लेंगे. Then law came up with what?
दैट ऑडिटर का कमिटी, ऑडिट कमिटी, राइट, शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली आईएनडीज, यानी आईएनडीज विल मेक अ कमिटीज, यानी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विल मेक अ कमिटी एंड चूज द ऑडिटर और अपॉइंट द ऑडिटर, चूज तो नहीं बट दे विल अपॉइंट द ऑडिटर, ताकि क्या हो, अनबायस्ड ऑडिट हो, राइट। ऑडिट कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली आईएनडीज। लास्ट, ठीक है, लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, राइट। देखो मिस्टर, इधर जो एनईडीज है ना, सॉरी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है ना, उनमें से एक वोटेड अगेंस्ट मिस्टर एक्सिस सम कोई प्रॉब्लम, राइट। तो मिस्टर एक्स सेड देख अगले साल तेरी सैलरी कट कर दूंगा, करेक्ट और नॉट? इफ यू वोट अगेंस्ट मी नेक्स्ट ईयर 20% कट इन योर सैलरी, राइट। ऐसा भी हो सकता है, टेल मी यस और नो, टेल मी, हो यस सकता है सर, क्या? आप एक बार मेजर डिफरेंस बता सकते हो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में? Simple, executive directors are actually salaried person in that organization. जैसे समझ लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तुम मेरे इधर फैकल्टी हो, मैं तुमको एक डायरेक्टर बनाया, राइट। आज अगर मैं कोई, इफ आई ब्रिंग समथिंग अप एंड यू से नो, कैन आई फायर यू? यस आई सर। एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, यू आर डायरेक्टर, आई कैन फायर यू, करेक्ट और नॉट? इफ यू यस वोट अगेंस्ट मी, राइट, आई डोंट हैव पावर टू फायर यू, बट नेक्स्ट ईयर कैन आई रिड्यूस योर सैलरी, यस सर। राइट। तो वो भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए रेम्यूनरेशन कमिटी है ना, एक रेम्यूनरेशन कमिटी बनाने को बोली, हु डिसाइड्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर एंड द और मेजर की मैनेजरियल पर्सन की, उसमें भी देयर शुड ओनली बी आईएनडीज। सो क्या ना हो, व्हेन वोटिंग हैपन समवन वोट्स अगेंस्ट यू, वोट अगेंस्ट योर बॉस, राइट, तुम्हारा रेम्यूनरेशन कम ना हो, समझ में आ रहा है? ओके, यानी आपका एक लिस्टेड कंपनी में रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी डिडक्टेड इफ यू वोट अगेंस्ट योर ओनर, ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सी वेदर दैट इज ओके। और इफ द ओनर सेज दैट डू इलीगल थिंग्स, डू फ्रॉड, यूज पब्लिक मनी एज एन हाउ यू वांट, करेक्ट, I will take care of the auditor. In that case, law says that audit and remuneration, both committees should be made up of INDs who are unbiased, right? And they will choose a perfect auditor and they will what? Basically give the proper remuneration to the NADs. NADs क्या, sorry, executive directors. बराबर है क्या? देख लो जरा. All makes sense if you look from what? Corporate governance. Actually, audit का point है, right? मैं पढ़ सकता हूँ क्या ऑडिट? टेल मी। फिर कुछ ये चीज एक्चुअली मैंने 15 डेज का ऑडिट का क्लास लिया था पहले, वो किसके ऊपर? सारा कुछ सिमिलर ही है ऑलमोस्ट इसमें और उसमें। हाँ मैडम, ये ऑडिट का ही पॉइंट है मैडम। मैं वही क्वेश्चन करने वाली थी कि सर ये इंटर रिलेटेड है क्या दोनों, तब तक आपने नहीं नहीं नहीं, ये इधर क्या ऐसा एक एसीसीए को आदत क्या है, हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा, सारे सब्जेक्ट का एक थोड़ा एक एक पॉइंट छोड़ देने का, करेक्ट, राइट। तो उस पे क्या करेगा ना वो, नेवर विल इट आस्क अ क्वेश्चन व्हेन स्टूडेंट्स हैव डन इट थरली, बट जिस टाइम पे उनको लगता है ना दैट स्टूडेंट्स हैव बिकम अ बिट लूज, एक क्वेश्चन आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक एमसीक्यू दिख जाएगा, राइट। और फिर आप क्या करोगे ना, यू विल बी सो पैनिक्ड इन दैट कि अरे हमने तो पढ़ाई नहीं है, थ्योरी कौन पढ़ता है इतनी, बट आई नो दैट एक एमसीक्यू भी आ गया 2 मार्क्स विल टेक यू फ्रॉम 48 to 50, बराबर है ना? टेल मी, वो 2 मार्क्स मेक ऑल द डिफरेंस, राइट। तो 1 MCQ ऑल्सो कम्स अप ऑन दिस, यू नेवर नो, बराबर है। इसके बाद खाली अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, प्रॉब्ली विल डू इट टुमारो। टुमारो फर्स्ट वी स्टार्ट विद दैट, करेक्ट, एंड देन टुमारो वी स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, करेक्ट, वी विल गो टू डिस्काउंटिंग, वी विल गो टू कंपाउंडिंग, करेक्ट। तो कल का सर लेक्चर बहुत, हाँ बोलो। सर टोटल शेयर होल्डर रेम्यूनरेशन के जो रिटर्न के जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं, आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो? अरे नहीं, कौन मैं कौन से अभी होंगे नोट्स क्या? ही डाल रहा हूँ ना, अरे राजू नोट्स ही डाल रहा हूँ, रुक जा। ओके सर। हम्म, 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 हम्म। देखो डाल दिए, ओके क्या, देख लो।
आपके ग्रुप में डाल दिए, एफएम के ग्रुप में, एफएम के नोट्स आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। होमवर्क करके आना टीएसआर का, यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीएसआर। 2 या 3 क्वेश्चन है, डू देम, राइट। विल बी देन व्हाट रैपिंग दिस अप आज के लिए। टुमारो वी कैन मीट सेम टाइम 6:30। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गुड नाइट, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सर। वेलकम गाइस, बाय बाय।